Now you guys can see me. चलो चलो बढ़िया. Uh, I don't know आप लोगों ने कुछ सुना है नहीं सुना. I think I'm live now. Uh, Welcome to the stream. भाई, if you can see me live, just write something in the comments. चाहे एक लोग हो, दो लोग हो, जो भी हो. All welcome. भाई लोग, सबसे पहले तो बिग एल. सबसे पहले बिग एल. मुझे लगा बुकायो साका ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है. Turns out somebody retweeted an old tweet. मैंने डेट चेक नहीं करी. And I thought Bukayo Saka signed a contract. Bhai, I was so happy. I was like, yes, World Cup se pehle. Hi Shauradeep. Hi Akarshan. I thought Bukayo Saka signed a new contract, yaar, and it was just an old tweet. So yeah, big L for me. Kya matlab, I was thinking we'll talk about this, and I was so happy. But turns out fake news, as Trump says. Yes, Mridul Bhai. Subscribers gaining rapidly. Kritadanya Yadav ji, I am not a Barca fan. I used to be also a Barca fan, but then Barcelona took Cesc Fabregas from us, and उस दिन से मेरा और बारसा का खून की दुश्मनी हो गई. It doesn't mean I hate Barcelona, of course. I still respect it as a club, but वो होता है यार, थोड़ा ना दिल में लगता है. Yeah, sure, Rideep, man, I can't. रोहन, dude, मैंने बैठ के थंबनेल बनाया. I had a long day. मैं आके बैठा, मैंने थंबनेल बनाया. मैं यस यार, बुकायो ने साइन कर लिया. आज तो भाई मतलब लाइव पे तो फुल पार्टी होगी, फुल W's all over. Just turns out it was an old tweet, yeah. Hi Santosh, how are you? And yes, I am happy about Arsenal players in the Brazilian squad. Well, happy as an Arsenal fan, but also slightly disappointed because yeah, Brazil looks like itna lamba, they'll go deep. Manas bhai in the chat, please. W's for Manas bhai. 725 subs. जब लास्ट टाइम हम लाइव गए थे तब मेरे सब काउंट था 380. Now it's almost double. Anay Kritadnya, I am from Delhi. Now I live in Dublin in Ireland. Hi, bhai. Good to see Martinelli and Jesus get a call up, says Bipra. Bipra, one of the OGs of the channel. Um, and yes, Martinelli and Jesus ka call up. We'll talk about this. We'll talk about the Brazilian squad. In fact, मैं भी side पे खोल ही देता हूँ. But yes, man, I'm very happy कि Martinelli and Jesus got called up, and it's a huge, huge deal for these two guys. Of course, Jesus ka more or less done ही था, but Martinelli going, I'm very happy for him as a young guy, finally getting a chance. No problem, Shauryadeep. All fans are welcome here. No problem if you're a Barca fan and everything. But sorry, I can't tell. But eventually, he returned home. Yes, man. Barca Kapul. You can't deny Barca Kapul. It's a very big club. Yes, Akarshan, one ka double. By the way, we have really gained good subs. Great to see, and it's all because of fans like you, Rohan. Great to have you back again. And of course, thank you to everyone who's come from other channels and who's fans of other football teams. बहुत बढ़िया. And thank you for being here. Um, Being on all community channels have been helping tremendously. Bhai, I am calling myself the Sambit Patra of this community. You know Sambit Patra, right? हर न्यूज चैनल पे हर दिन 1 घंटे कहीं ना कहीं बैठ जाता है. I've just been making use of the time I have and making sure कि uh, I put myself out there as much as possible. Now, content की बारी, I will bring on the content. Next Arsenal target, Ehsanul Wasif. We'll talk about this. We'll talk about everything. Just answering some comments first. Yes, guys, please like the stream. Yes, Mridul, of course. Sambit Patra OP. No, of course not. Khair, देखिए, let's talk about, well, like I said, सबसे बड़ा L. Bukayo Saka has not signed a contract. So ये thumbnail is a fake. And I'm sorry to mislead you. But I got baited by an old tweet जो किसी ने retweet कर लिया था, and Arsenal का official handle था. मेरे को लगा ये किसी ने Arsenal को impersonate करके तो नहीं कर दिया. And उसमें Arsenal था, उसका tick भी था, and I was like, okay, fine. And then I took a nap and I was made the thumbnail and everything, and I was like, यार chat पे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी. Then fake news, मैंने date check नहीं करी.
But I think Saka will sign a contract sooner rather than later. Martinelli will sign a contract sooner rather than later. Gabriel जो सेंटर बैक है उन्होंने तो ऑलरेडी कर लिया है. सलीबा का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. um, we'll talk about the Brighton game as well, Bipra, but let's first talk about अपने दो Brazilian boys who have been called up to the national team, गैब्रियल जेसूस एंड गैब्रियल मार्टिनेली. भाई गैब्रियल मार्टिनेली के लिए प्लीज थोड़े डब्ल्यूज हो जाए चैट में. Huge deal for a 21-year-old, yeah. To be playing alongside training with players like Neymar and Vinicius. Of course, tough luck for Matheus Cunha, who was there in the last Brazilian squad. Tough luck to Roberto Firmino also, जो जाना था. Daksh, by which national team you're supporting this World Cup? I am supporting Brazil and France. But yes, W for Gabriel Martinelli is in the chat. I can see huge W's. 21-year-old यार, क्या लगता है मतलब इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. शोज कि वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट टैलेंट है एज अ फुटबॉलर, एज अ फुटबॉल फैन इन जनरल भी आप देख सकते हो. गैब्रियल मार्टिनेली इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जो अभी अपकमिंग आएगा. दैट मार्टिनेली स्पीच अबाउट हिज फादर एंड हिम ड्रीमिंग फॉर द वर्ल्ड कप वाज सो होलसम. लव हिम टू बिट्स. हाँ यार, मतलब देखो, he's given this interview जहाँ उसके फादर ने उसको बोला था in 2022 there will be a world cup and you will play for that world cup. And ये बहुत पहले की बात है. मतलब that time he was in the third tier या second tier of या fourth tier of Brazilian league, और उसके फादर को इतना कॉन्फिडेंट थे. इट शोज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फैमिली अराउंड यू. एंड काफी सारे जो ये प्लेयर्स अब्रॉड से मूव करते हैं, one of the biggest reasons they fail to acclimatize into ये प्रीमियर लीग एंड अ न्यू कंट्री इन अ न्यू कल्चर. एंड आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस यार. मतलब एक नई कंट्री में आना आसान नहीं है. जब तक आपके पास अच्छा फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो कुछ बात नहीं बनती. मार्टिनेली के पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं, मार्टिनेली के फादर उसका मनी हैंडल करते हैं. सो ही इज he is somebody matlab who has his feet on the ground and he has a great family support next to him. Santosh, yes, Argentina I said only for Messi because yeah, as a team I'm not supporting Argentina, not because I don't like them or hate them, but just for Messi because that man deserves. मतलब कोपा अमेरिका तो जीता, but I think World Cup भी, it's something that he should win and he would want to win. So that's only for Messi. Other than that, I said last time कि अर्जेंटीना तो है ही है, but sorry, मेसी के लिए अर्जेंटीना, but otherwise France and Brazil. Um, yes, man. जैसे fourth division, if my memory serves me right, and Akarshan जैसे कह रही, he's such a humble guy, man. Yeah, we all love Martinelli, and it's not only Arsenal fans. If you get to know Martinelli, Martinelli is a great footballer to also watch. है कुछ footballers होते हैं. अभी of course I'm not saying he's like Ronaldinho, but when I was a kid, and of course अगर आप लोगों ने रोनाल्डिनियो को देखा है खेलते हुए, रोनाल्डिनियो was such a joy to footballers in general. No matter if you are a Real fan, no matter if you are an Inter fan, वो किसी भी टीम के लिए खेला हो, मतलब everybody loved Ronaldinho because of the smile. And same thing, Akarshan, I would say instead also कि humble भी नहीं, वो hard working भी बहुत है. Martinelli, Vinny, I think that is too early. Vinny has won a lot more than Martinelli. बट देखते हैं यार. दिस इज समथिंग, दिस इज गोइंग टू बी मे बी अ राइवलरी और अ कंपटीशन जो फ्यूचर में बहुत आगे चल के जाएगा. मुझे तो लगता है कि इवेंचुअली मार्टिनेली विंग से जाके ना सेंटर में खेलने लग जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज. यस, फोर्थ डिवीजन. लव फॉर बांग्लादेश, आर्सेनल इज लव एंड यू आर माय लव एज वेल भाई. हक भाई. He was 7 years old like a bacha when his father told him about the 2022 World Cup. Elite mentality from that age. हाँ यार, and इतना top पे पहुंचना, you cannot reach the top, especially at a club, at one of the biggest leagues in the world and one of the best teams in that league, without an elite mentality. And like I said यार, fathers figures, family support होना बहुत essential होता है. He just need a pen to sign a new contract. That what makes me so happy यार. अब मतलब जब हमारे यंग प्लेयर्स थे, हाई पोटेंशियल प्लेयर्स थे पहले भी, 2000
2008 से लेके 2016 तक हमेशा हमें डर लगता था कि यार सिटी ले जाएगी, बार्सा ले जाएगी, रियल ले जाएगी, एंड वी लॉस्ट सो मेनी गुड प्लेयर्स बिकॉज ऑफ आवर इनएबिलिटी टू गिव देम सक्सेस. बट इस बार जो प्रोजेक्ट इतना अच्छा चल रहा है, it makes me so happy that young players are committing to this project, committing to Arsenal, and they see a future in this project. Why Chelsea link with this Russian midfielder Zakarian? Bhai, I would not be able to confirm because I've heard the Zakarian guy is really good, but I'm not sure कि ये Chelsea के transfer links कितने हैं. मैं Chelsea का उतना transfer news follow नहीं करता. Um, would love to see a discussion on the October Player of the Month. Yes, good point, Mridul. We'll bring it up. The diversity of opinions from fans. Do you only want to discuss the nominees? Because nominees में I think Xhaka, Saka, Partey, and Jesus है, I think, right? I might be wrong, but Xhaka, Saka और Partey तो definitely हैं. Um, but yes, it's good कि हम प्लेयर ऑफ द मंथ पे काफी डाइवर्सिटी है, एंड वी इट्स जस्ट नॉट कि जो सबसे लेस शिट खेल है उसको प्लेयर ऑफ द मंथ दे दो. एवरी वन ऑफ दीज प्लेयर्स प्लेड रियली वेल इन दिस मंथ. Martinelli enjoys playing. He just loves football. It's everything for him. I hope he just sticks to his game and keeps enjoying the sport. Yes, true. He came as an ST when he came to Arsenal, shifted to left wing by Emery, and then he flourished more. हाँ यार. Um, but I also think, जैसे historically भी, if you think about players like Thierry Henry, वो left में पहले initially, sorry, Van Persie भी था, Henry भी था, पहले strike कराया, then they were moved to left wing to understand the game better, to understand spaces better, and then finally they went back to strikers. So yeah, maybe Martinelli is the same thing. I'm waiting for England call up. Not my favorite team, White. हाँ भाई, White का मेरे को है, but White की I think personality is very anti what Potter wants. ये I think काफी लोगों का मानना है कि Potter wants subdued, sort of mature and not big personalities. Ben White is a huge personality. Okay, काफी सारे comments देख रहा हूँ about Saliba. We will talk about this more. Who do you support other than Arsenal? Mean have a soft spot? Very weird question for me because I mean मेरे लिए तो normal question है. इसका answer थोड़ा weird हो सकता है. I like Leeds. I have a very soft spot for Leeds because जब से I've never seen them play पहले, बट जब से वो प्रीमियर लीग में प्रमोट हुए हैं फ्रॉम बियल्सा से लेके इवन जो अब जेसी मार्श के अंडर खेल रहे हैं, वो काफी रेजिलिएंट क्लब है. एंड आई एम इन जनरल अ फैन ऑफ टीम्स जो फ्री फ्लोइंग अटैकिंग खेलती एंड दे हैव अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स. सो मे बी लीड्स इज माई सॉफ्ट स्पॉट. अदर देन दैट ऑल्सो क्रिस्टल पैलेस बिकॉज पैट्रिक वियरा. बट या फ्रॉम व्हेन 2000 से लेके 2001 के आसपास, दैट वाज माय first incident with Arsenal. Anyways, guys, I'll take comments later as well. Oh, हाँ, sorry, you're right. Potter नहीं Southgate. I'm so sorry. मैं थोड़ा confused हो जाता हूँ. Right. So, yeah, man, huge news for Gabriel Martinelli. इतना young age पे इतने बड़े tournament पे जाना, and of course Gabriel Jesus, yeah. Everyone thought कि जब वो Arsenal आ रहे, he's taking a step back अपने career के लिए, and people were saying कि um, maybe Arsenal, he's good for Arsenal, but this is a back foot for his career. I think Gabriel Jesus has also done really well to show up into the Brazilian squad. या वो ग्राफिक नहीं मिल रहा है मुझे. बहुत सुंदर ग्राफिक बनाया था ब्राजीलियन टीम ने, मेरे को रेडिट से निकालना पड़ेगा. खैर, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी अपनी टीम्स बताइए कमेंट्स में कि हु आर यू सपोर्टिंग दिस वर्ल्ड कप. शौर्य, I love you, man, but please थोड़ा spam मत करिए. I'm going to go through all the comments. Um, for Gabriel Magalhaes not to be picked, although he's an excellent ball playing defender, but I think he needs control his bozo moments. नहीं यार, ये जरूरी नहीं है. I think every coach has his favorites. अब जैसे अगर आप टीटे को देखें, they did not have. I mean, he's taking Danny Alves because they don't have a right back, and he's taking Thiago Silva because he's solid and dependent and everything. वो मिलिटाओ को ले रहे. मिलिटाओ के अंदर काफी कम गलतियां नहीं है. So I think yeah, it makes sense that Gabriel's not gone, but I'm not going to be surprised वो next major tournament में अगर नहीं मतलब he'll play. I'm pretty sure he'll play. कहाँ गया यार वो? गनर्स में है वो, कहाँ पे है?
एक सेकंड रुक जाओ, बॉयज एंड गर्ल्स एंड अदर जेंडर्स. Brazil, Brazil, Brazil. Yes, there it is. Okay. Let me see if I can share the screen. Okay. हाँ, आप लोग mostly I see Argentina, Spain and Argentina, Argentina, Spain and Argentina. Not supporting anyone in this World Cup really. Also, this Gabriel Bozo agenda needs to stop. हाँ यार, I mean, देखो, I don't know there is any defender who does not have a mistake in him. If even if you love Saliba as much as I do, उसने भी लास्ट गेम में काफी एक दो गलतियां करी थी. But um, just like I said that sometimes new players get a benefit of the doubt. And when Gabriel का first season था, nobody picked down his गलतियां यार. But he's very crucial. He's one of the spine of the team कि build up में help करता है defensively, and of course goals यार. He scored 9 goals, all from corner situations. Huge deal for Arsenal. उसने set pieces इतने dangerous बना दिए हैं. So whatever Mayank is saying, I completely agree. And hello, of course, Mayank भाई कैसे हो? Militao could have played RB, but like I said, TT के अपने होते हैं. Mannschaft, of course, Germany, always great contenders for the World Cup. Brazil and France, Brazil because most of our players are from Brazil, is a soft spot. बिल्कुल बिल्कुल. भाई doctor said 80% of my ligament is destroyed and there will be an operation in the upcoming days. भाई speedy recovery to आदेश भाई. I hope काफी serious injury नहीं हुई हो आपकी, but it is. I hope you recover faster. खैर, let's just quickly look at the Brazil squad. कहाँ गया भाई लोग? Window, Chrome tab, this one. क्या आप लोगों को दिख रहा है? Right. So this is the Brazilian squad. अगर आप देखें, let's just quickly go through this because I think confirmed तो I think Brazil का ही आया है. Alisson, Edison, Weverton from the Brazilian league. Danilo, Dani Alves, Alexandro, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, Bremer, Casemiro, Fabinho, Guimaraes, Fred Paqueta, Everton, Ribeiro, Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, Anthony, Rafinha, Richarlison, Martinelli, Rodrigo, and Pedro. ओके, वन क्वेश्चन फॉर द चैट. इसमें से कौन इस टीम में नहीं होना चाहिए एंड कौन इस टीम में? नेम वन प्लेयर हु शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड वन प्लेयर हु शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम. एंड जब तक ये होता है, आई क्रिएट अ बैनर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है? who One player who should not be a part of this team and one player who should be a part of this team. I have one player who should not be and one player who should be. Mm. ओके, 5-6 कमेंट्स आ गए हैं. हाँ मयंक भाई, वी शुड डू वीडियो ऑन आवर सीजन सून. आई थिंक एक काम करते हैं, जब वंस द सीजन स्टॉप्स फॉर द वर्ल्ड कप ना, विल डू अ रिकैप ऑफ लाइक हाफ वे पॉइंट तक का. विल पिक अप अ फ्यू गेम्स एंड विल सी कि हमने विल गो ओवर अ परफॉर्मेंस. भाई एवरीवन चेक आउट मयंक का चैनल. अगेन एन आर्सेनल फैन चैनल. इफ यू लाइक आर्सेनल कंटेंट, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें. ही मेक्स गुड कंटेंट and I'll be collaborating with him soon. Yes, Akarshan, Gabriel के goals have been there. Yes, ऑस्ट्रेलिया का भी आज आया है. मैंने डेनमार्क का अभी तक देखा नहीं है. ओके, Dani Alves, yes, that is somebody who I do not think should be going, but that is a Tite का favorite player. सादिक भाई होते, he would have had a good idea about कि कौन होना चाहिए कौन नहीं चाहिए. फ्रेड नहीं होना चाहिए. um Maybe, but I don't think Fred will get a shout here. I think Fabinho, Bruno Guimaraes, and maybe Paqueta might play, or maybe it could be Casemiro, Fabinho, and Bruno. Pata nahi. Pedro out, Firmino in. Good shout, good shout. But I think Pedro की गेम से काफी लोग familiar नहीं है. Dani Alves out, he is my player as well. Richarlison injury concern Firmino. हाँ यार, एक तो ये ना injury वाला मेरे को समझ नहीं आया. I don't know if he's actually injured. If he's injured, then fair play. बट इंजर्ड प्लेयर्स को ले जाना ना हमेशा
Huge risk because they can re-injure themselves very easily. Danny Alves. Anyone from Bremer or Alves and Richarlison should not be there. Firmino in most probably. Yes. I think Pedro and Firmino should get a chance. Pedro to hai bhai. Unless you're talking about some other Pedro. Should not be. Pedro should be Bobby Firmino. Danny Alves because of age. Danny Alves and Bremer. Yeah, sure. Yeah, of course, Mayank. Joelinton. Good shout, man. Joelinton is also being very important for Newcastle. मैं सोच रहा हूँ और कौन हो सकता है. पेड्रो आउट, फर्मिनो को चांस देना चाहिए. हाँ यार, आई रिचार्लिसन एज अ प्रिकॉशनरी एब्सेंस. ट्रू. सो यार मेरे हिसाब से तो आई वुड आल्सो टेक डैनी एल्वेज आउट. आई वुड प्ले मिलिटाओ एट राइट बैक एंड I would actually take Magalesh also. Yeah, Magalesh, he's very good, and I think agar aap eventually by the next major tournament you will have to replace Thiago Silva. Um, so you should have somebody next, the next upcoming center back. अभी चलो कहेंगे लोग मिलिटाओ है, but other you need a pair for him as well. Marquinhos भी धीरे धीरे होगा. और सादिक भाई इन द चैट रिचार्लिसन. अच्छा, so सादिक भाई तो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं. सादिक भाई, who do you think who should be out? um Bremer was Syria defender of the year last year and low key one of the better position. I think Bremer, हाँ यार, Bremer को लोग, Bremer की गेम से लोग ज्यादा familiar नहीं हैं, इसलिए people will go for a little more established name. But I think यहाँ पे especially मेरी तरफ से तो काफी वो आएगा. Hmm. Bias that Gabriel Magalhaes should go. We also need to understand that international manager won't pick the team just on current form. Every manager has trusted players, and that is what this guy will also do. यार इंग्लैंड का मैनेजर. मैं पॉटर ही क्यों दिमाग में आ रहा है मेरा. साउथगेट, साउथगेट. Everton could be out and Firmino in. Bhai, it'll be huge for Firmino. I think Firmino deserves to go, man. Every team needs a big game player, and I think Firmino की एक underrated quality ये है कि Firmino is a very big game player. He's been in so many finals. He's been in so many pressure situations. But yeah, Magalhaes would have been handy if they needed a left-footed CB. Agreed, agreed. Okay, अब इसको शेयर करना बंद कर देते हैं and we'll come to the next topic, which is game week 15 recap, right? अगर मैं प्रीमियर लीग रिजल्ट्स देखूं, ठीक है, सबसे पहले भाई मैच ऑफ द वीक कौन था? Which was your game of the week? बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स थे. There was the Spurs Liverpool game. There was Arsenal Chelsea, of course. There was लीड्स बॉर्नमथ, काफी हाई स्कोरिंग गेम था. क्या लगता है, व्हाट वाज योर गेम ऑफ द वीक? विला यूनाइटेड, मयंक कह रहा है, ऑफ कोर्स. गुड इवनिंग. बैटल ऑफ द ब्रिज, बैटल ऑफ द ट्रेनिंग ग्राउंड ब्रो. स्टैमफोर्ड ब्रिज पे वी बीन विनिंग 3 कंसेक्यूटिव गेम्स. गुड इवनिंग अगेन. फिर हमारा गेम वाज द बेस्ट, ऑफ कोर्स. Arsenal fans, of course, will always say Leeds. Yes, I see a few shouts for Leeds also. Let me see if I can share the screen, a Chrome tab. Okay. I hope you guys can see. Right. तो अगर हम लोग देखें, there was Forest and Brentford. मैं बैनर हटा देता हूँ एक तो यार, ये बैनर नहीं दिख रहा है. बट हम गेम वीक 15 का रिकैप कर रहे हैं भाई एंड बहनों एंड एवरी अदर जेंडर हु इज अराउंड. Nottingham Forest, Brentford, Wolves and Brighton, सिटी फुलम. अरे यार हाँ, सिटी फुलम यार, वो गेम देख के मैं इतना फ्रस्ट्रेट था यार. टाइम क्या है वहां पे भाई? अभी यहाँ पे 5:25 इन द इवनिंग. लीड्स बॉर्नमथ यार, अगर किसी ने वो गेम नहीं देखे ना, जस्ट प्लीज वॉच इट्स हाइलाइट्स. बहुत इंटेंस गेम था. इट्स वन ऑफ द रीजंस आई लव लीड्स. बहुत गोल खाते हैं, बट या द लीड्स बॉर्नमथ गेम यार, मतलब क्या कमबैक था. आई वाज थिंकिंग कि बॉर्नमथ विल मैनेज टू स्टील समथिंग फ्रॉम लीड्स, बट ऑफ कोर्स लीड्स नेवर गिव अप एटीट्यूड है. सिटी गेम के बारे में क्या लगता है यार? हाँ, लेनो को सेव कर लेना चाहिए था. गोलाजो एडिट्स, आई कंप्लीटली एग्री यार. वो उसके हाथ की यार यहाँ के नीचे से निकल गया था वो.
हालैंड की पेनल्टी, एंड इट वाज़न्ट अ गुड पेनल्टी। उसने जो फर्स्ट पेनल्टी ली थी हालैंड ने, वो किसी भी टीम के अगेंस्ट ली थी। um, बट यार ये पेनल्टी तो रोक लेनी चाहिए थी, एंड इफ बर्न लेनो डिड अस अ फेवर यार, वी कुड हैव बीन, अभी हम सिटी से कितने, 1 या 2 पॉइंट आ गए हैं, खैर जो भी है, could have been at least a couple more points ahead of City. Um, can understand the pain of Liverpool fans waiting to see City drop points and just winning it in the dying moments. हाँ यार, मतलब मैंने तो कहना शुरू कर दिया कि um, watching, looking for City to lose is a extreme sport. बहुत emotionally hurt होते हो आप लोग. City is something that, I mean, अगर उन्होंने points drop कर लिए, it should be a cause for celebration यार. It should be celebrated as a win for us also. Um, बट यार एक चीज उस गेम से जरूर समझ आई, एज एन आर्सेनल फैन यू गाइस कैन आल्सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि यू कांट जस्ट विन एवरी गेम बाय डोमिनेंस। जितना डोमिनेंट सिटी है, जितनी उनकी डेप्थ लोग कहते हैं, यू हैव टू बी लकी एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम एज वेल, राइट? अब जैसे आर्सेनल का गेम था लीड्स के अगेंस्ट, हम बैरली वी मैनेज टू गेट अवे विद 3 पॉइंट्स, लीड्स वर ऑल ओवर अस, ऑलमोस्ट पेनल्टी भी हो गई थी लास्ट में। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी हमने ड्रॉ कर दिया था, एंड पीपल वर क्रिटिसाइजिंग एंड एवरीथिंग कि यार समटाइम्स यू जस्ट नीड द लक टू ग्राइंड आउट अ विन और ग्राइंड आउट अ रिजल्ट आल्सो समटाइम्स। तो इट शोज कि यार चैंपियंस बनने में, जैसे ग्रैनिट शाका ने भी अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कल कहा था कि एट द एंड ऑफ द सीजन नोबडी केयर्स हाउ यू विन in November and nobody cares how you win in December and October. Everyone just sees the table ke position and that is it. So watching City lose, of course, heartbreak. बट यार वो पेनल्टी सॉफ्ट नहीं थी, क्या लगता है तुम लोगों को? केविन डे ब्रुयना जो अब कह रहे हैं कि क्लेवर है, दैट्स द थिंग, राइट? अगर कोई और प्लेयर होता लाइक विद अ रेपुटेशन लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, साला, अब नाउ साका इज गेटिंग अ रेपुटेशन एज अ डाइवर, कि यार देखो फिर डाइव कर दिया, बट नाउ इट्स केविन डे ब्रुयना, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ऑफ कोर्स वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग. एवरीवन सेज कि नहीं नहीं, ही इज बीइंग क्लेवर. सो ये तो एक नया चीज है, बट आई थिंक इट वाज अ सॉफ्ट पेनल्टी मैन. बट इट्स सिटी, सिटी ऐसे ही मोमेंट्स में निकाल लेती है कुछ ना कुछ. um, उसके हैंड्स और बॉडी से बीच में से निकल गया था, हाँ, बर्न लेनो के, यस, वुड हैव बीन 7 पॉइंट्स ऑफ. भाई तुम और दर्द मत दो. व्हेन इज सिटी आर्सेनल, आई विल हैव टू चेक, आई थिंक शायद से रीस्केड्यूल हुआ है, बट मे बी नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा. वेयर डू यू सी केडीबी अमंग ऑल टाइम ईपीएल मिड्स? Yeah, it depends on how you see and how you rank these people. If you're doing it purely based on statistics, then he has to be up there. He's every season he comes this close to beating the all-time assist record. I won't be surprised वो कर लेगा. And the man, जितना जितना वो एज कर रहा है एंड जितनी उसकी परफॉर्मेंसेस उतनी ही बेटर होती जा रही हैं. um, so if you talk purely in terms of statistics, he's going to be one of the best. If you talk in terms of impact on their team, he was one of the cornerstone signings of the Man City juggernaut. कुछ साइनिंग्स होती हैं जैसे कंपनी, जैसे केडीबी, जैसे अग्वेरो, तो इम्पैक्ट के मामले में भी, सो आई वुड से केडीबी has been one of the best EPL mids, and I think he will be a City cult hero for years to come. Contact was there, हाँ यार, मतलब it was a penalty. बट यार वही होता है ना, डू यू रिमेम्बर वो जेसूस को साउथहैम्पटन के गेम में उसको ऐसे पकड़ लिया था वो बंदे ने, एंड जेसूस डिड नॉट गो डाउन. टेक्निकली बाय द रूल दैट इज आल्सो पेनल्टी, बट आपको थोड़ा क्लेवर होना पड़ता है, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि यू हैव टू सेल दैट पेनल्टी. Mings pulling Saka isn't pen, but that KDB is a pen. Yes, exactly similar to that. Nailed on penalty थी, stupid tackle. हाँ यार, it was a moment of stupidity, but also, you know what? अगर हम, if we talk about it fairly also ना, Fulham did not look that they had a man advantage. मतलब City were 10 men down and they still had 70-80% possession. And Fulham ने कुछ किया ही नहीं, मतलब उन्होंने man advantage count ही नहीं करवाया. So I don't think Fulham deserved anything at the end of it. Apart from all the PL fans of different clubs are supporting mostly Arsenal because बहुत banter हुआ है Arsenal का. Yeah, I understand that, but I'll tell you why at the base of it everyone is supporting Arsenal.
we are playing beautiful football. um, this is how football should ideally be played. It should be pleasing to the eyes. आपका मूवमेंट क्विक हो, आपके पासेस अच्छे हो, आपके गोल्स अच्छे हो, आप चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, आप पीछे नहीं बैठ रहे। एंड ऐसा नहीं है कि आर्सेनल हमेशा से ही ऐसे खेल रहा था। बीच में लास्ट 1-2 साल में हमने बहुत डिफेंसिव एंड नेगेटिव भी खेला है। बट नाउ we are doing all of these beautiful footballing things, quick movements and everything. Um, and we are doing it with the youngest team. And we are doing it with spending money in the right way on young players. We are not buying world class talent. We are buying players with either good potential or who are on the brink of world class. तो इसको जो फुल प्रोसेस है, इट्स सो नाइस टू सी इट कम आउट। एंड ऑफ कोर्स राइवल्स के अलावा एवरीवन एल्स इज एंजॉयिंग इट। यस, वी विल टॉक अबाउट द टाइटल चार्ज। आर वी टाइटल कंटेंडर्स और नॉट? केडीबी चेल्सीज बिगेस्ट रिग्रेट साला भी हो सकता है भाई। क्या कोई पॉइंट नहीं है। देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग आवर डिसीजंस टू सिटी, वी आर नेवर फेवर्ड। हाँ, बट आई थिंक अब आर्सेनल जिस पोजीशन पे, वी शुड आल्सो स्टार्ट गिविंग अप दिस विक्टिम मेंटालिटी आल्सो। If Mitrovic was playing, result would have been different. शायद से, I mean, he would have been an option for City to think about. If you haven't seen, there's a compilation of lowest moments doing the rounds about the bad moments, and everything is finally changing for good. Yeah, हाँ यार. There is also, if you look through people, there are also full Arteta out moments also. And people का काफी quick turnaround हो गया है. But yes. भाई पराठा खाओगे? नहीं यार, मेरे डिनर में अभी 2-3 घंटे हैं। बट थैंक यू सो मच लकी रेड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई लकी रेड्स, तुम पूरे दिन यूट्यूब पे बैठे रहते हो, तुम मोहक भाई की गेमिंग स्ट्रीम पे भी थे हैं। मैंने तुम्हें 1-2 स्ट्रीम्स और पे भी देखा हुआ है। तुम भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते? What's your thoughts on rotational players who've mostly played Europa? Good enough to start regularly if the World Cup brings injuries? Good question. We'll come to this. Varun, thank you. It's a good question. मैं सोच के कुछ बोलता हूँ अभी। It's not just stats for KDB. He's everywhere. Tracks back 90th minute. Yes, man. वो clip देखिए किसी ने? 90th minute पे he was charging back. Um, free kicks से लेके corners से लेके passes, assists, goals, does everything, man. One of the best. One of the best. Brendan Rodgers' resurgence, or people judge him too early? I think if you give any manager enough time, he will turn things around. Unless you're Raf Holson-Hotel. उसने आई थिंक थोड़ा घपला कर दिया। डनीलो वुड बी अ गुड साइनिंग। अगर आप वो डीएम की बात करें पल्मेरस वाली, हाँ, प्योरली बिकॉज, एंड आई डोंट नो, मे बी ही माइट हैव एडजस्टमेंट इश्यूज, बट बिकॉज हमारा काफी स्ट्रॉन्ग ब्राजीलियन कंटिजेंट है क्लब पे, मे बी नॉट। बट इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि हाउ ही एक्लिमेटाइजेस। बट ये पार्टे से सैम्बी का जो ड्रॉप ऑफ होता है ना इन क्वालिटी, दैट इज तो डेफिनेटली नॉट डिजायरेबल। सो आई एम होपिंग डनीलो इज अ बेटर साइनिंग। आई थिंक ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड दैन सैम्बी, बट कुछ कह नहीं सकते यार। देखो टोरेरा भी हमें लग रहा था कितना अच्छा साइनिंग है, एंड देन ही जस्ट नेवर एडजस्टेड टू लाइफ इन लंदन। सो it'll all be funny if City lose CL and PL. भाई, if City loses PL, it's good enough for me. Okay. नहीं, अब सीरियस हूँ, कल से पढ़ूंगा रोज भाई। ये मैं कुछ सालों तक बोलते आ रहा था, कल कभी आता नहीं है, बट गुड लक टू यू। पढ़ लेना प्लीज। Being a Man U fan, I don't like what Arsenal is doing, but as a neutral, I'll say it's a pleasure to watch. So good to Arsenal to play like this. Karthik bhai, if you wait a couple of years, your team will play beautiful football like this, and I can tell you, um, it's great that what Ten Hag is doing. It's great the players you are signing. Yeah, I think you're linked with Gakpo and everything. So आई थिंक गिव योर सेल्फ अ कपल ऑफ ईयर्स। ये विला वाली डिफीट्स आती रहेंगी भाई। हमने बर्नली से हार खाई थी, हमने ब्राइटन से हार खाई थी, हम भी बहुत गेम्स हारे थे यार अपनी प्रोसेस में। थोड़े पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, बट इवेंचुअली विल विन। आलोक भाई कौन है? आई एम नॉट श्योर। अगर मेरे को बोल रहे हो, मेरा नाम आलोक नहीं, मेरा नाम दक्ष है। एंड अगर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बुंडेसलीगा देखता हूँ, नो, आई डू नॉट वॉच द बुंडेसलीगा, बट whenever there are any German teams in the European competitions, I watch them. हो गया साका न्यू डील कंफर्म्ड। मानस, ये तो मेरी गलती थी यार। It's my fault. I fell bait to an old tweet and I thought Saka signed, but it was an old tweet from 2020. But I think he'll sign eventually. All signs point to the fact that he'll sign.
Danilo is an El Neni replacement and he's 20, yes, but Sambi, yeah, wait, it's all about the adjustment, yeah, Mayank. Do I live in India? No, I do not anymore. I live in Ireland and I live in Dublin. Okay, okay. So, like I said about गेम वीक 50, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. हमने सिटी की गेम के बारे में बात करी थी. अब हम चलते हैं एक बार आर्सेनल की गेम के बारे में बात करते हैं. यार देखो, I'll talk about Arsenal का गेम in length and then I'll take comments and you guys can of course comments पे डालते रहो अपने जो भी thoughts हैं. There is this narrative which is going on that Arsenal got lucky against um, Chelsea. Arsenal did not create much in the first half, which is, I won't say it's completely accurate. And they're saying that Chelsea ने create किए थे 3 बार and then we just एक decision की वजह से खराब हो गया. And then there is this narrative that Chelsea की first team नहीं थी इसलिए Arsenal lucky हो गई. भाई, I am telling you, if you're somebody who is an Arsenal fan or who follows Arsenal, get ready for a lot of goalpost shifting. From the start of the season, it's only been a month. You've not faced any big teams. You've only faced Crystal Palace, Brentford, Bournemouth, लीड्स नहीं, और जो भी छोटी मोटी टीम्स को लोग कह रहे थे, जो छोटी मोटी नहीं थी, आई मीन यू कैन सी बिग टीम्स ऑलरेडी स्ट्रगल अगेंस्ट देम. तो ये था कि you've not faced any big teams. उसके बाद हो गया कि you've only faced big teams at home. बट ये आर्सेनल है, आर्सेनल को अक्टूबर डिस्ट्रॉय कर देगा. अक्टूबर विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर आर्सेनल if they can challenge City for the title. Arsenal does not have the depth to get through October. फिर अक्टूबर निकल गया. अक्टूबर में हमने सिर्फ एक यूरोपा लीग गेम हारे और एक गेम ड्रॉ करा और बाकी सारी गेम्स जीते. Then it became Arsenal. अरे, you've not beaten any team away from home. जो away from home थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उससे तुम हार गए. Okay, fair enough. Then we beat Chelsea and now it's Chelsea की first team नहीं थी. भाई, as much as I tell people कि यार Chelsea को time दो and everything, उनका bench is not something to laugh at. And कुछ कह यार, कुकरेया के लिए if you're giving 60 million and he's not performing and you're saying that this is not really our strongest 11, bhai, then what have you spent 60 million on? um Ziyech is not a pushover. He might not be performing for Chelsea but he's a good player. ठीक है, आपके बेंच पे और कौन था? कॉनर गैलेगर क्रिस्टल पैलेस के लिए इतना अच्छा खेला, चलो पॉटर हैज नॉट फाउंड द बेस्ट यूज फॉर हिम, बट यार कॉनर गैलेगर है. ब्रोजा साउथहैम्पटन के लिए लास्ट सीजन ही प्लेड सो वेल. ठीक है, पॉटर कैन नॉट यूज हिम प्रॉपरली, क्या कर सकते हैं, बट ही इज अ गुड प्लेयर. आपके बेंच पे काफी सारे अच्छे प्लेयर हैं हु आर अंडर परफॉर्मिंग. आपके पास स्टर्लिंग है, आपके पास ओबामियांग है, आपके पास कोवाचिच है बेंच पे, आपके पास है कूलीबाली बेंच पे. एंड आई अंडरस्टैंड काफी सारे लोग इंजर्ड भी थे, कुछ लोग रिकवर करके आ रहे हैं, कुछ लोग फुल्ली रिकवर्ड भी नहीं है. बट दिस गोल पोस्ट शिफ्टिंग इज गेटिंग अ लिटिल अनोइंग नाउ एज एन आर्सेनल फैन कि भाई हम करें क्या इवेंचुअली. नाउ इट्स बिकम, अब बताओ नेक्स्ट फेज क्या होगा इसका. अभी once they stop running out of excuses, because अब halfway point आने वाले, every team will have almost played every team in a matter of 6 games. 6 गेम के बाद ऑलमोस्ट हर टीम ने हर टीम को खेल लिया होगा. बिकॉज बट आर्सेनल ने सिटी को नहीं खेले बिकॉज वो पोस्टपोन हो गया था क्वीन की डेथ की वजह से. But every team would have played every other team. Then it will become, if Arsenal does not win the league, it's an embarrassment. Bhai, it's nobody is saying Arsenal will win the league. We are saying Arsenal can win the league. We have the players and we have the quality to win the league. But City has more depth. They have more experience. जो experience खरीदा नहीं जा सकता. ठीक है. And if we come second, if we come third, fourth, I'd say even fourth also, it will be a disappointment कि हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे end करते, but it will not be a failure, to be honest. Because personally for me, success is to have the youngest team in the Premier League and go toe to toe with the champions who won
4 आउट ऑफ द 5 प्रीमियर लीग्स, आई थिंक यही ऐसे ही कुछ स्टार्ट है ना, सिटी ने लास्ट 5 साल में 4 स्टार्ट्स जीते हैं, 4 लीग जीते हैं। एंड इफ यू कैन गो टो टू टो विद देम, विद द यंगेस्ट टीम इन द लीग जिसका पीक अभी तक आया भी नहीं है। हमारे सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जो 25 से ओल्डर हैं, 3 या 4 ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, ठीक है। हमारे बाकी सारे कोर प्लेयर्स आर यंग, they've not reached their peak and they will only get better। एंड हमने कुछ लोग जैसे बेन वाइट पे 50 मिलियन खर्च करे हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग। ये कोई एवी फालतू वालतू प्लेयर्स नहीं है हु आर अंडर परफॉर्मिंग, हु आर नॉट गिविंग देयर ऑल, हु आर नॉट प्लेइंग फॉर द क्लब। दीज प्लेयर्स विल ऑलवेज ऑलवेज परफॉर्म एंड विल कीप गेटिंग बेटर। एंड भाई विनिंग रिकॉर्ड है, इससे बेटर क्या चाहिए तुम लोगों को, राइट? So if you're an Arsenal fan, if you like watching Arsenal, get ready for all these goalposts. Get ready for the fact that people will tell you that if you don't win the league, it's going to be horrible. अरे भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। It's great what we are doing. The target was, like Mayank is always saying, top four was always the target. The signing were made according to that only, and that is true. At some level, maybe we are overperforming, and maybe we'll come back to third or second. But यार, जितने हमने 13 गेम्स में जितने हमारे पॉइंट्स हैं, ओनली वन टीम हैज कम सेकंड एंड नो टीम हैज कम बिलो सेकंड इन ऑल ऑफ प्रीमियर लीग्स हिस्ट्री, ठीक है। सो इफ वी कम सेकंड इट इज नॉट एन एम्बैरेसमेंट एंड डोंट लेट एनीबडी टेल यू दैट। दैट बीइंग सेड, डू नॉट सेलिब्रेट, मतलब डू नॉट फॉरगेट टू सेलिब्रेट जितना भी हमारा सक्सेस है अभी चल रहा है। कोई बोले कि यार आर्सेनल तो बिल्कुल टाइटल चैलेंजर्स है, हाँ भाई हैं टाइटल चैलेंजर्स। अब इट इज नॉट टाइम टू बी मीक और ऑन द फेंस एंड बी लाइक नहीं 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 यार, हम तो नहीं है, हम तो नहीं है। बोलो हम टाइटल चैलेंजर्स हैं, हमारा स्टैट्स बैकअप करते हैं, हमारे प्लेयर्स बैकअप करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कुछ लोग नहीं चाहते बोलना बिकॉज ट्रोलिंग है एंड बैंटर है, बट दैट इज फुटबॉल मैन। एंड what would you rather have? Not putting your reputation, your support on the line, and Arsenal being fifth, fourth, and nobody talking about Arsenal, or everybody talking about Arsenal, and you having the opportunity to support your team full of heart, बिल्कुल खुले दिल से support करना, right? So, bhai, this is what it is being an Arsenal fan. We can be there, we can beat the top teams. We have beaten the top teams, bhai. Apart from, we've beaten Chelsea, we've beaten City, we've beaten Chelsea, we've beaten Spurs, we've beaten Liverpool. यूनाइटेड से हारे हैं और सिटी से अभी खेले नहीं हैं। यूनाइटेड से अवे हारे हैं। आई एम प्रिटी श्योर अगर उस दिन पार्टी होता तो गेम शायद से डिफरेंट रिजल्ट होता, ठीक है। बट इट्स ओके, इट इज दैट इज द गेम। आई डू नॉट थिंक वी प्लेड बैडली अगेंस्ट यूनाइटेड ऑल्सो। एंड हमने जितनी भी बड़ी टीम्स के साथ खेला है, लिवरपूल के अगेंस्ट थोड़े लड़खड़ा रहे थे, बट वी मैनेज टू कीप इट टुगेदर एंड 3-2 जीत गए। स्पर्स कोई चांस ही नहीं दिया। चेल्सी, भाई ओबामयांग के 8 टचेस थे यार, उसका तुम हीट मैप देख लो। आर्टेटा का हीट मैप ऑन द टच लाइन इज मच मोर बिगर देन व्हाट ओबामयांग डिड। उनके पास कोई शॉट्स नहीं थे। भाई हमने ऑलमोस्ट 3 गोल्स जितना एक्सजी था हमारा, एंड वी ऑलमोस्ट स्कोर्ड द गोल ऑफ द सीजन, जितना इतना इंट्रिकेट पे था जो जेसूस ने मिस कर दिया। तो भाई नाउ इज नॉट द टाइम टू बी लाइक नहीं यार वी नॉट इन द टाइटल रेस एंड आर्सेनल 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 नहीं है। I am not saying we will win the title. I am just saying we can win the title. We have the players, we have the capability, we have the points, man. We have the freaking points. ऐसा भी नहीं है कि हम बड़ी टीम्स को हरा रहे हैं और छोटी टीम्स के साथ कर रहे हैं। इफ यू लुक एट अदर टीम्स, लिवरपूल, दे बीट मैन सिटी, दे लूज टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। इफ यू सी स्पर्स, उनको बोर्डमथ के अगेंस्ट कम बैक करना पड़ता है, दे कांट कम बैक अगेंस्ट लिवरपूल। सो एवरी टीम हैज सम ऑफ द अदर इशू where they're either faltering against lower teams or bigger teams, and we are beating almost all of them. तो भाई अब confident नहीं होगे तो कब होगे? So yeah, for our title charge, I would say it's on, man. We might not win it. We might win it. Nobody knows. But historically, we should not come below second. And even if we come below second, bhai, top four is always the aim. And more than anything, yaar, I'll tell you one more thing. ये position जैसे हम अभी खेल रहे हैं, people, players around the world are not blind. This is what will make other players want to play for Arsenal. कि एक यंग टीम है जो चैलेंज कर रही है एक क्लब को who have taken years of spending a lot of money and finally getting it right to being a well-run club. अभी when nobody will debate the fact कि City is a well-run club, but भाई उन्होंने 35 million विल्फ्रेड बॉनी पे स्पेंड करे हुए हैं।
उन्होंने इलाके में मंगाला पे इतने मिलियन स्पेंड करे हुए हैं। जाओ कंसेलो से पहले उनका विंग बैक डनीलो था, एंड दे स्पेंड कॉन्स्टेंटली 50 million ऑन देयर विंग बैक्स, एंड दे फाइनली हैव गॉट इट राइट। अब उनकी श्रूड साइनिंग्स आ रहे हैं, अकांजी है, आके है, जॉन स्टोन्स है, ठीक है। नाउ दे आर गेटिंग shrewd signings and now they know when to sell players and when to get players. They can sign a Julian Alvarez who's good, they can sign a Haaland, बट भाई ये हालैंड के पीछे, ये जूलियन एल्वारेज के पीछे एक विल्फ्रेड बॉनी भी है, ये रूबेन डियास के पीछे एक इलाक्विन मंगाला भी है, ठीक है, ये एडरसन के पीछे एक क्लॉडियो ब्रावो भी है। सो इट्स नॉट दैट सिटी आर ऑल्सो दिस imperious untouchable godlike क्लब जो हमेशा से ही वेल रन था। देव मेड सम ब्लंडर्स। हाँ भाई, आकर्षण इज राइट, 100 million ग्रीलिश। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ ग्रीलिश एज अ प्लेयर। आई थिंक ही इज जस्ट बीइंग यूज्ड इन अ डिफरेंट वे एंड आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरीली अ बैड साइनिंग। इट्स व्हाट पेप वांट्स। बट 100 million ब्रो, आर्सेनल ने एक 72 million की साइनिंग गलत कर दी, एंड आई एम टेलिंग यू वो हम कभी नहीं वापस करेंगे। वील नेवर मेक अ बिग मनी साइनिंग, वील ओनली मेक अ वेल स्काउटेड एंड फाइनेंशियली साउंड साइनिंग। इफ मुड्रिक के लिए पीपल आस्क 100 million, हम नहीं पे करने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मुड्रिक कितना भी अच्छा प्लेयर हो, हम 50 million से ऊपर नहीं खर्चेंगे किसी प्लेयर पे। एंड वी कैन नॉट कम्पीट विद सिटी फाइनेंशियली, बट दिस इज आवर प्रोसेस। भाई एक फेरन टॉरेस भी था, उन्होंने बेच दिया, चलो फाइन, दिस सोल्ड हिम फॉर मनी। बट या मैन, अगर इफ यू हैव बॉल्स ऑफ स्टील एंड हार्ट ऑफ स्टील, तो थोड़ा तो बैंटर और थोड़ा सा ये नेगेटिविटी एंड बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स को इग्नोर करो, एंड बिलीव इन योर टीम, बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टिक योर नेक आउट। इफ पीपल से ओ आर्सेनल टाइटल जीतेगा, हाँ भाई जीतेगा, मे बी जीत जाएंगे इस बार, वी कंपीटिंग विद वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। पेपे के चक्कर में राहुल सैनेली सैक करना पड़ गया। भाई राहुल सैनेली ने कुछ बहुत शेडी चीजें कर ली थी, इसलिए उसको सैक करना पड़ गया। If Grealish was a horse, he'd be put down out of mercy. Yeah, I think that's a little too harsh. Farron wasn't even a flop, just homesick. That is true, Varun. You're right. But I think that's the thing, right? You can eventually afford to spend so much money on a player who might not work out, and of course, you cannot account for homesickness. But the point is, you can spend an equal amount of money to replace him very quickly, जो हम नहीं कर सकते. Okay, भाई. Um, थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं। क्लासिक ओबा फ्रॉम लास्ट सीजन, एटलीस्ट आई विल अंडरस्टैंड। एंड भाई आई डोंट नो व्हाई ही मेड दैट प्रोमो आल्सो। चलो जो भी है, व्हाट मेड यू सपोर्ट आर्सेनल? टू बी ऑनेस्ट, फीफा 2000 एंड देन आर्सन वेंगर एंड देन पैट्रिक वियरा एंड थियरी ऑनरी, बट ओरिजिनली फीफा 2000। नीड टू चेंज, नीड दैट जनवरी केएससी 100 million इंजेक्शन। हाँ भाई, एंड आई थिंक इफ वी फिनिश ऑन टॉप ऑफ द टेबल बिफोर द वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप आने तक भी टॉप ऑफ द टेबल, केएससी दे भी देगा। एटलीस्ट 100 नहीं देगा तो 60 million तो दे ही देगा। रिमाइंड्स मी ऑफ आर्सेनल 2007-8 सीजन। भाई प्लीज डोंट इंजेक्ट सैडनेस इनटू माय हार्ट। मेरे को अभी भी याद है, हम थर्ड आए थे आई थिंक उस सीजन। टीलेमंस, डानिलो, फनीलो, टॉरेस इन जनवरी विंडो। भाई मतलब 100 million ग्रिलिश बात हो चुकी है। फेरन विल नॉट कम, आई डोंट थिंक ही विल कम। I don't know Ferran कर कैसे रहा है. He's at Barca right now, right? I don't know how he's doing. Do you think we need a backup striker? Can't trust Nketiah, man. Yeah, ideally we would have two world-class players in every position, but हमें needs-based करना पड़ेगा. Nketiah might not be the best, but he is somebody we can still function with. We cannot function with Sambi, unfortunately. And as much as I love Sambi, um, him playing and Partey not playing can be the decider कि हम games जीतते हैं या नहीं. So I would rather go for a DM and a winger who can play right wing and left wing, because Saka needs a rest. भाई मैंने तो I have not seen Saka not play unless it was a Europa League game, and I don't know who's a capable deputy for Saka. लोग रीस नेल्सन कहेंगे ये गलती मत करो, एक ही गेम हुई है, दो गेम हुई है, उसमें से एक गेम में उसने 2 गोल मारे हैं. आई डोंट ट्रस्ट हिम स्टिल, बट इफ ही कम्स गुड, बेस्ट. मैंने सुना मार्किनियस को भी वी माइट लेट गो ऑन लोन इन जनवरी, तो दैट कुड आल्सो बी अ फैक्टर की दैट मींस वी माइट लुकिंग फॉर अ विंगर एज वेल. ही विल स्टे एट बार्सिलोना, ही डजंट वांट टू गो. हाँ यार, मतलब बारसा का पुल है. फेरन वाजंट फ्लॉप, जस्ट होमसिक. ये हो चुका है. प्लीज चैट्स पढ़ो भैया. सॉरी भाई, आई हैड टू
get on that rant about, this Arsenal wala thing. What did Mudrik's teammate talk about? अरे I think that was just a joke, man. ये कुछ reports तो आ ही नहीं रही हैं. जिशान, मैं ना अपना ट्विटर दे देता हूँ, मेरे को ट्विटर पे डीएम कर दो. सेम ही नेम है, ग्लोबल वॉफल्स है मेरा. मैं इसको बैनर डाल देता हूँ. कहाँ गया ये रहा. दिस इज माई ट्विटर. मेरे को ट्विटर पे डीएम कर लो. आई सेंड यू माई लिंक्डइन लिंक वहीं पे. ठीक है, नो इश्यूज. um, फिर से अगर चाहिए तो मैं 2 सेकंड और देख लेता हूँ. ओके, लेट्स गो बैक टू द कमेंट्स. मैंने अपना लिंक्डइन के लिए बात कर ली है. व्हाई कांट वी अट्रैक्ट बेलिंगम एंड लिवरपूल कैन? I don't think anybody says we can't. It's also about the player. देखो, प्लेयर कोई फर्नीचर नहीं है ना कि हम उसको पैसे दे दे और वो आ जाएगा. बट इफ हु नोज यार, आई मीन us being in this position will give us the best opportunity to sign somebody like Bellingham. Heard KSC are keen on making investment in Jan. हाँ यार, Josh Kroenke looks like last game maybe he was celebrating with the team, so he looks like he's invested into the team. एंड अगर इफ आर्टेटा सोच कि भाई हम टॉप ऑफ द टेबल हैं एंड यू वांट टू compete with the juggernaut which is Manchester City, we have to get players. Otherwise we can't just win with all the kids. 13-14 top of the table half into the season. First game of Jan we conceded 4 to Liverpool in 20 minutes. हाँ यार, ये थोड़े PTSDs हैं, बट आई थिंक उस टाइम, आई डोंट नो, इट वाज नाइविटी और समथिंग, बट हमारा चैलेंज हमेशा फरवरी तक खत्म हो जाता था. This time World Cup is also a complicating factor, and not only for us but for also other teams. But for now, I do not think कि अभी ऐसे कुछ signs हैं कि we will collapse. I'm not saying a collapse is impossible, but it is much more unlikely. And I hope Arteta gets the players he wants in January, and he has the ability कि सबको refocus कर ले जल्दी से जैसे ही प्रीमियर लीग स्टार्ट हो. एक विंगर तो चाहिए, सही बात है. आर्सेनल हिंदी, एंड ऑफ कोर्स आपने पहले भी हाई बोला था. वेलकम बैक टू द लाइव. इन्वेस्ट इन अ गुड अमाउंट और फॉर द डीएम स्पॉट. प्रॉपर बैकअप फॉर पार्टी. सही बात है यार, 100% Golas Edits. We need a backup for Partey who can perform at least 80% of what Partey does. And I don't think Sambi is in that Partey position. Sambi is that Xhaka position. Elneny आगे, so maybe urgency उतनी ज़्यादा नहीं होगी यार, but Elneny is also not a Partey. So we need a player better than Elneny who can do a Partey job. Is doing good slowly is integrating into the squad. Good to hear that, man. Ferran Torres personally is a, I really liked Ferran Torres. मैंने फुटबॉल मैनेजर 2018 में फेरन टोरेस को साइन किया था, and it was a beast in that game for me. Balogun lighting up Liga. I would really love Jonathan David of Lille. यार, I think Balogun, एक तो ये है कि we cannot keep all the talents we have. So players like Balogun, maybe Nketiah, someone or the other will have to go. हम सारे young players को होल्ड करके नहीं रख सकते. Especially if you're talking about a backup striker. सोच हमने एक बैकअप स्ट्राइकर ले लिया जैसे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जेसूस, एंकेटिया, बैकअप स्ट्राइकर, एंड देन उसके बाद बालोगुन. बालोगुन खुद नहीं आना चाहेगा. हमने तो उसकी मुश्किल से कन्विंस करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. आई थिंक ही विल गो सून. Okay, just realized that in the last 15 years Arsenal have only finished above 80 points once, and it shows कि हमारा कितना बड़ा fall from grace हुआ यार. But 80 points now is a more competitive league, and I don't think 80 points लाना उतना आसान भी होगा unless you're City and Liverpool. Such a good position, players like Bellingham will be like to part of this. हाँ यार, but like I said, Bellingham, I don't know कितने truth है, but Bellingham is apparently a Liverpool fan. He also likes the City project. City में उसके 2 mates, एक mate भी है हालैंड करके. You never know, but the better position we are in the table, उतनी ही ज़्यादा better हमारे पास capability होगी to sign these guys. More points at the same point in time than the Invincibles. That is true, but यार वो Invincibles team was something else. Better team and more spine than those previous seasons where we fizzled out. हाँ यार, ये मेरे को भी फीलिंग आ रही है. वी हैव अ गुड मिक्सचर ऑफ. देखो, वो जो पुराने सीजन थे ना, आई थिंक मैंने आर्सकास्ट पे सुना था या कहाँ पे सुना था, मे बी आर्सेनल विजन पॉडकास्ट पे सुना था कि इन द प्रीवियस टाइम्स वी हैड मोर टेक्निकल प्लेयर्स. प्लेयर्स जो जिप करते थे, छोटे प्लेयर्स थे, उतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे. इनविंसिबल्स एरिया में 2002 2004 वी हैड दिस वेरी फिजिकली स्ट्रांग टीम जो धीरे धीरे एक टेक्निकल टीम में ट्रांजिशन हुई. दिस टीम हैज टेक्निकल प्लेयर्स एज वेल एज फिजिकल प्लेयर्स. अगर आप
डिमिनिटिव हो आपका, इफ यू नॉट द बिगेस्ट बिल्ट और द टॉलेस्ट डज नॉट मीन यू नॉट फिजिकली स्ट्रांग। आप गैब्रियल जेसस को देख लिया यार, कितना हाउंड करता है वो अटैकर्स को। गैब्रियल मार्टिनेली को देख लो, रिलेंटलेस। साका नॉट अफ्रेड टू गिव इट बैक। वो कुकरेया ने उसको 4-5 फाउल करे थे, he gave it back to कुकरेया also. Xhaka physical, Partey physical, Gabriel, Saliba physical monsters, Odegaard technical genius। यार मतलब बहुत बढ़िया मिक्स है इस बार हमारे पास। I think Arsenal fans should stop being unsure of Arsenal being, यार मैनिफेस्टेशन तो चलो ठीक है, वो तो अलग ही बात है, बट आई थिंक मोस्ट आर्सेनल फैंस हैव पीटीएसडी। आप यहाँ पे भी देख ही रहे हैं कि एवरीवन इज ब्रिंगिंग बैक पुरानी सीजन्स वेरी प्रीटी मच फेल्ड। सो यार थोड़ा बहुत तो पीटीएसडी होता ही है। इब्राहिम बाम्बा कैसा है आर्सेनल हिंदी? ऑनेस्टली नो आइडिया मैन, आई हैवंट सीन हिम। I might have to sell my Sambi stocks, bro. I am in the same. I was knee deep, waist deep in Sambi stocks. I really want Sambi to succeed. But yeah, if this Shaka redemption arc has shown anything, um, कोई भी कुछ भी कर सकता है। 13-14 wasn't as competitive, 100% agree. Going to be very crucial matches with Newcastle, Man United, Tottenham. भाई द थिंग इज जनवरी में ना ये सारे क्लब्स जो भी अपने साथ प्रोसेस पे हैं, लिवरपूल, यूनाइटेड, चेल्सी, दे विल साइन बिग। अब जैसे अंकुंकू है, who would not love अंकुंकू at Arsenal? Maybe we don't need him of course, but चेल्सी अंकुंकू ले लेगा, ग्वार्डियोल ले लेगा, लिवरपूल might go for a good sentiment। ठीक है, चेल्सी we don't know, but they Todd Bowley will spend another 500 million and then Chelsea will say कि हमारे पास कुछ है नहीं बेंच पे। um, तो यार इनके साथ भी अभी भी compete करना है। These clubs might not be in the title contention, but they have the financial muscle to physically pull themselves into that. So it is not going to be easy. Ki it's not only going to be crucial with us as a transfer window, but like you said, for matches also, Newcastle, United, and Tottenham, very crucial for us. But ये तो सब होता है यार। I don't think there is any month which is not crucial anymore. अगर कोई month में हम Southampton, Leeds, Brighton भी खेल रहे हैं, वो भी crucial है। जीतने तो अब सारे ही games है, because City के simple सी math है भाई। अगर हम if we win as many games as possible, higher probability that we can give ourselves the cushion to drop points against City, or even more confidence to beat them. What if he brings ZH to Arsenal? London plus Arteta ball resembles Ten Hag, Ajax as well. I think yeah, he's personally sick of England. The guy is a confidence player, and आई डोंट थिंक हमारे पास टाइम है ऐसी चीज़ों पे गैम्बल करने का। अब टाइम है थोड़े से प्रूवन प्लेयर्स लेने का, अब टाइम है थोड़े से हाई पोटेंशियल प्लेयर्स लेने का। ZH कॉन्फिडेंस की बात है, एंड इफ ही डजंट वर्क आउट देन दैट्स अ साइनिंग एंड मनी वेस्टेड। What do you do for a living? I am a student. I am studying for my PhD. No problem, bhai Jishan bhai. I am here to answer your questions. Otherwise, I would have just recorded a video. But I love interaction. I would rather have a proper poacher who can just finish his chances, but Arteta system wants his CF to drop. ये हमने लास्ट लाइव में भी बात करी थी, बट यार इफ यू सी जेसूस के कितने टचेस थे एंड ओबामियांग के कितने टचेस थे, इट शोज दैट ओबामियांग बाय द वे इज अ बेटर फिनिशर देन जेसूस एट सम लेवल, मे बी अ बेटर पोचर लाइक यू सेड। बट हमारे सिस्टम में गोल्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो मे बी राइट नाउ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई थिंक जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है विद जिरूड, विद शमक, विद ओबामियांग, विद लाकाजेट, जहाँ पे वो सडनली स्टॉप परफॉर्मिंग एंड एवरीथिंग गोज टू शिट आफ्टरवर्ड्स बिकॉज बाकी जगहों से भी गोल नहीं आ रहे थे। इट्स व्हाट मेक्स अस एंग्शियस कि यार ये स्ट्राइकर अगर गोल स्कोर नहीं करेगा तो सब टट्टी हो जाएगा। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। Different from 13-14 teams, we can see it. There is a control, overall play. I'm confident this will continue. Mentality is also there. That is very true. And man, we have Mikel Arteta. ठीक है, अगर आप किसी भी फैन से पूछो कि आर्सेनल का फॉर्च्यून इतना क्यों चेंज हो गया, इट्स नॉट अ प्लेयर, इट्स द मैनेजर। ही इज नाउ द हाईएस्ट विनिंग मैनेजर आफ्टर 150 गेम्स, हायर देन आर्सन वेंगर। आर्सन वेंगर एंड जॉर्ज ग्रैम के ज्यादा ड्रॉस थे, इसलिए आर्टेटा की ज्यादा है। आर्टेटा ओनली विंस और लूजेस, हेट्स ड्रॉस। सो द मैनेजर आल्सो इज अ ह्यूज पार्ट टू प्ले। What are your thoughts on Sambi? I think he's being not played in his usual position. Maybe once he gets a regular run of games, I think he'll go on loan maybe. But once he gets a regular run of games in his preferred position,
ये दिख रहा है, हाँ. Once he gets a run of games in his preferred position, which is that Jaka wala position, I think he'll good. 150 on Jude Bellingham, we don't do that, and I don't think we will do that here. हमें 120 मिलियन के आसपास मिलेंगे, हमें भी 200 मिलियन तब तक नहीं होंगे. चेल्सी से किसी को ले आओ भाई, नहीं. आ, कौन कौन आएगा चेल्सी से? आई मीन आई डोंट वांट एनीबॉडी अनलेस इट्स अ रीस जेम्स और अ मेसन माउंट. बाकी सब नहीं यार, बाकी सब आर अंडर परफॉर्मिंग. थिंक बेलिंगम वुड बी स्ट्रेचिंग इट अ लिटिल बिट. हाँ यार, बेलिंगम. ये ख्वाब मत देखो, खुद ही कोई ठेस पहुंचेगी. Daksh bhai, I was looking for an Indian Arsenal channel. Finally gotten massive respect, and thank you so much, Karthik bhai, for showing up to this live and interacting with me. Hopefully, you will enjoy the great vibes. Bhai, ये positivity channel है. So all great vibes here. There are a lot of chats, guys and girls, and everyone who is here. So I will skip a few. Don't feel bad and don't spam अगर आपका नहीं लिया मैंने. We have to talk more. 1 घंटा already हो चुका है. Um, ठीक है. रोजेकी, विल्शर, ओजिल, रैमजी, दैट मिड वाज टेक्निकली गुड बट फिजिकली पुअर. भाई इंजरीज के मामले में वो कितना टट्टी मिडफील्ड था, आप सोचो. रोजित्स्की हमेशा इंजर्ड, विल्शर हमेशा इंजर्ड, ओजिल कभी भागता नहीं था और बैक पेन होती रहती थी, रैमजी इंजर्ड. ओके. Being a Spurs fan, do you think Conte can still finish top 4 for us? Pains me to say this, but yes, because yeah, Conte is a results based man. But with Conte, you need to spend money or he will go. Conte is that girlfriend जिस पे आपने पैसा खर्च नहीं किया, जिसका आपने रिचार्ज नहीं कराया, जिसको आप डेट पे नहीं ले गए, he will leave in the first instance, and then you are stuck with a bunch of defensive players जो कॉन्टे सिस्टम के लिए परफेक्ट हैं बट और किसी सिस्टम में नहीं चलेंगे. एंड आप हर गेम में हर हर टीम जहाँ पे कॉन्टे करा हुआ है आप देख लेंगे, कॉन्टे के प्लेयर्स इवेंचुअली निकल जाते हैं. भाई विक्टर मोजेस को उसने इतना अच्छा कर दिया था, बट उसके बाद किसने विक्टर मोजेस के बारे में सुना है? राइट. Conte players are only for a Conte system, and as a Spurs fan, I would do everything to keep him happy for as long as possible. I think your mission should be to get a trophy as soon as possible, even if it's the Carabao Cup. तुम बस trophies जीत जाओ. For now, we have to be patient with Sambi. He's 22. We'll learn. Yes, true. Overall gameplay presently is better than City. Haaland. Yeah, huh. But Haaland is one. But that's Eben. That's probably because Haaland doesn't need to be involved in the build-up, right? They have so many good technical players like De Bruyne, Gundogan, Bernardo, Grealish on the wings, Foden on the wings, Mahrez on the wings, Rodri at center defense, who's also great technically. So he doesn't need to. And he, as Aubameyang, 8 touches for Aubameyang is horrible, but 8 touches for Haaland is very dangerous. So I think that's a very different team at a different stage. Last season scarred me so much. I still think we need to work our asses off. Bhai, working our asses off cannot stop. It can be because of last season ka PTSD. It can be because of pichle seasons ka PTSD. But the reason we are here is because we worked hard as one team. We worked hard to grind out results. We worked hard to dominate teams, and we've had this unity कि जब सिचुएशन डिफिकल्ट हुई क्रम्बल नहीं हुए हम. लीड्स के अगेंस्ट सबको लगेगा लास्ट सीजन वो हम गेम हार जाते, मैं भी बता रहा हूँ लीड्स वाला. बट इस सीजन हमने बहुत स्ट्रांग रह के वी ग्राउंडेड आउट 3 पॉइंट्स. बहुत क्रूशल है. सो यस, स्कारिंग इज वेरी मच देयर, बट होपफुली नॉट एनी मोर दिस टाइम. अभी बेस्ट टाइम है टीम बिल्ड करने का जो 7 साल तक डोमिनेट करे. भाई मैं कह रहा हूँ, इफ साका साइंस, इफ सलीबा साइंस, इफ मार्टिनेली साइंस, गैब्रियल तो आ ही चुका है, बेन वाइट वगैरह बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी खुद के ऑप्शंस हैं एक्सटेंड करने के. ये टीम अगले 5 साल तक सेट है. आर्सेनल इतना अच्छा याद नहीं कब खेली थी लीग में. हाँ यार, ये ऑल आर इसी बात पे थोड़े से होते हैं. खैर, एनीवेज, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइटल चैलेंज, वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द गेम्स कैसे सिटी की गेम और आर्सेनल की गेम की बात करी. भाई गुड इवनिंग की 2 सेकंड बात कर लें. Villa beat Spurs. Villa beat Manchester United, and Liverpool beat Spurs. Weekend as an Arsenal fan, um, uploaded a new video. Yeah, bhai, always on the grind, Mayank bhai. Villa beating United काफी comprehensively, um, and Liverpool held on to beat Spurs also. Good weekend for Arsenal, right? I mean, unless वो लिवरपूल गेम थोड़ा ड्रॉ होता तो थोड़ा बेटर हो जाता, बट आई थिंक वी कैन नॉट बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द रिजल्ट. अगर आप प्रीमियर लीग टेबल देखें, कहाँ गई ये रही,
मेरे पास है सामने, तो आर्सेनल आर ऑन 34 पॉइंट्स इन 13 गेम्स, सिटी आर 32 पॉइंट्स। अगर वो फुलहम से हार जाती तो हम 4 पॉइंट आगे होते अभी उनसे। न्यूकासल 27, वेरी गुड गेम फ्रॉम न्यूकासल एज वेल। टॉटनहम 26, जो आई थिंक दे विल फॉल ऑफ इवन मोर। मैन यूनाइटेड, आई थिंक उनके फॉर्च्यून्स थोड़े चेंज होंगे। ब्राइटन 6, चेल्सी 7। भाई किसने सोचा था कि हम चेल्सी से 13 पॉइंट आगे होंगे एट दिस स्टेज ऑफ द सीजन। यूनाइटेड फैंस आर गेटिंग गिडी, दे विल नीडेड हम्बलिंग। हाँ यार, बट ये तो चलता ही रहता है। हम कब कम बैंटर करते हैं उनके अगेंस्ट, तो ये तो होता ही है। ओ यस मृदुल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। प्लेयर ऑफ द मंथ भाई लोग, ऑल द 13-14 पीपल हियर, हु इज योर प्लेयर ऑफ द मंथ? फॉर मी, अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो तुम्हें मेरे सलीबा का प्यार पता ही है। आई वुड कीप सलीबा मैन। आई नो इट्स नॉट अट्रैक्टिव टू नॉट पुट अ गोल scorer in your player of the month, but nothing has happened without Saliba this season and this last month. Uh, Likho, I'll keep highlighting some of them. When did you become Arsenal fan? I became an Arsenal fan in 2000. Became in 2006-7 thanks to my cousins who are United and Liverpool fans. Good man, Eben. Brilliant choice. You avoided illness and sickness and death and pain, and you embraced depression. But welcome to the family, and hope Arsenal gives you all the great vibes. Saka player of the month, Benny Blanco player of the month. Thoughts on Cristiano? That is, yeah, I don't want to get into it. I respect him as a player, but it's very clear the ये उसका level नहीं रहा है. नहीं नहीं भाई, हाँ सलीबा फॉर आर्सेनल, Almiron फॉर द पीएल। Almiron तो आई थिंक विल विन द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ। सलीबा माय मैन। थॉमस पार्टे ऑफ कोर्स, अगेन गुड शाउट, उसके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। मतलब यार कितना स्ट्रेंज है, हम अटैक रिलाइंग ऑन वन प्लेयर फॉर अटैक से अब रिलाइंग ऑन वन प्लेयर फॉर मिडफील्ड आ गए हैं। पार्टे, साका फॉर दैट गोल अगेंस्ट लिवरपूल, लीड्स एंड बोर्डो। हाँ लिवरपूल के अगेंस्ट पेनल्टी थी उसकी। और किसने गोल किया था? हाँ वो मार्टिनेली वाला असिस्ट जो उसने स्लाइड करके मारा था। एंड लीड्स के अगेंस्ट ऑफ कोर्स यार वो बहुत ही क्रूशल गोल था, एंड बोर्डो अवे भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल था। सो साका इज ऑल्सो गुड शॉट। मेरे लिए तो पर्सनली सलीबा है। बाय द वे वो लास्ट गेम में जो हमने ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर लिया था, उसका बिल्डअप देखा किसी ने? वेर सलीबा, बेनी ब्लैंको, पार्टे, शाका सब वन टच करके within a few passes we were out and we were on the counter. वो बस Jesus वो गोल स्कोर कर लेता ना, he would have scored the goal of the season, I'm telling you already. um I'm all for the Almiron redemption arc after the Grealish and भाई Almiron को तो bouquet of flowers and chocolates भेजनी चाहिए Grealish को। Partey, if you remove him our defense and mid goes down multifold। हाँ यार, ये ना कुछ हमारा सिस्टम की, आई थिंक आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दिस। हमारे सिस्टम की एक प्रॉब्लम ये है कि even though everyone plays as a part of a machine, कुछ parts बहुत important हैं। Ben White at right back, Zinchenko at left back, Partey at center mid, and I would say even Saka at right wing यार, ये जैसे ही चले जाते हैं ना, बहुत Ben White was the next level, of course bro, of course. Almiron ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई थिंक अगर आप इंडिया से हैं तो अभी इंडिया में रात के 11:30 बज रहे होंगे, थोड़ी रात को आपको चढ़ गई है शायद से आकर्षण। नो ऑफ कोर्स नॉट, बट यस हिज फॉर्म इज वेरी 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 गुड। बैलेंड और मे बी इज अ लिटिल टू मच, बट या सलीबा मैन, सलीबा फॉर मी ग्रेट ग्रेट प्लेयर। बहुत ही अच्छा चलेगा। और क्या बात करें भाई लोग, हु इज बेनी ब्लैंको? भाई बेनी ब्लैंको इज बेंजामिन वाइट, और बेन वाइट एज वी कॉल हिम। Benny Benjamin का short, Benny Blanco is a way you say white, and Benny Blanco was also a favorite cult hero. Google करो Benny Blanco कौन है? Oh, did you see this interview where somebody asked him why Benjamin? Because that's my name. और किसी ने वो देखा Ben White का, when the team was celebrating against Chelsea, उसने वो बॉल फ्लिक करके ओडेगार्ड के सिर, बिल्कुल सर के पीछे मारी थी। Man, that guy is a character, and I'm so happy he's with us. And by the way, Ben White hates football. Nobody in his family follows football. He says, I don't particularly love football. I don't do anything about He doesn't watch football. He doesn't play football. He just says that I was really good at it.
and I just kept doing it, and that is it, यार. He's just a talent who is great at football. वर्ल्ड कप में किसको सपोर्ट करोगे? मेसी, ब्राजील एंड फ्रांस. अब मैं अर्जेंटीना नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे सर पे चढ़ जाते हो. हेलो 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 अभिनव. देर आए दुरुस्त आए. हेलो राहुल व्लॉग्स, नाइस टू सी यू ब्रो. डोंट यू थिंक प्लेयर्स लाइक राइस मैडिसन डिजर्व बेटर टीम इन यूरोपियन फुटबॉल? यार ये थोड़ा एरोगेंस होता है. मतलब let's not pretend ki West Ham isn't a good team and Leicester isn't a good team. They might not be performing up to the standards this season, but yeah, they're an English team in the top flight of the Premiership. मतलब top flight of England, तो ये अच्छी teams तो हैं. Do they deserve European football? Declan Rice है Conference League में. Leicester, Maddison played European football for a couple of seasons as well with Leicester. Champions League I think खेला हुआ है. नहीं खेला उसने Champions League. I think Europa League खेला हुआ है उसने. खैर, बट वही है यार कि कैसे ये लोग सिस्टम में फिट करते हैं. अब जैसे डेक्लन राइस, आई डोंट थिंक ही फिट इन अ पोजेशन बेस्ड सिस्टम. ही इज मोर इन अ डायरेक्ट सिस्टम. सिटी में डेक्लन राइस नहीं चलेगा. आई डोंट थिंक आर्सेनल में भी चलेगा, ऑल्दो आई लव हिम. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट नॉट वर्क आउट इन आर्सेनल. जैसे हम खेलते हैं, आई एम नॉट श्योर उसका पासिंग रेंज कितना है, बट ही इज ग्रेट एट ब्रेकिंग अप प्लेस लाइक पार्टीज. He'll work very well at Chelsea. I can tell you this much. We should go for Rice. I would love it, but I'm not sure uska fit kaise baithega. Arsenal team is full of characters, personalities. Love the support. That Xhaka time wasting part was classic. It was absolutely phenomenal. Xhaka doing the best he can to rile up. भाई उसने I think ये podcast पे भी सुना था. He took away focus from Chelsea winning the game to Chelsea just focusing on Xhaka. और यही sort of smartness चाहिए होती है. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ. बहुत बोला मैंने. ओके. जाका ग्रेनन चलोबा वाज गुड. भाई उसको पता था वो क्या कर रहा है. नीड भाई ये मेसी रोनाल्डो डिबेट्स मैं इस चैनल पे नहीं लूंगा क्योंकि ना मैं हैंडल कर सकता हूँ, ना मेरे इस पे कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिवरपूल सेल? इट्स अफेक्ट्स देयर. Mohammed, it depends of the kind of sale it is, man. If it is a full sale, that means that it will be as difficult as the Chelsea sale in terms of getting people to agree the amount that FSG want. And then, of course, it will affect the sales because why would a seller invest money into the club he is selling? But if it is a partial sale कि वो stakeholders में से कुछ share बेच रहे हैं, if they're selling a little bit of shares, then it becomes really interesting because that shows that either they want more money into the club to compete with the big financial clubs, or they don't want to be the majority shareholders. They want to be somebody else to invest more money and they just want to have a minor stake. So it depends on the kind of sale it is, bro. Okay, nahi, world, too much disrespect. Hi, yeah, I think Ronaldo is getting a little too disrespected, but I think his ego is also getting a little bit in his way. Um, there is something called regressing with grace. You know, when you know that your body can't do it, of course, you want to keep proving at the best level. You want to silence people, you want to silence your critics. You still live in that time when you were one of the best in the world. I'm not saying Ronaldo is not the best in the world, but um, yeah, I think usko bhi thoda, he has to adjust his expectations of what his body can do now. फीलिंग सैड. आज मैन यूनाइटेड हार गई कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल फ्योरेंटीना एफसी के साथ पेनल्टीज में. हाँ यस, मैं सोचूं ये क्या हुआ, बट ओ अच्छा, ही लॉस्ट फ्योरेंटीना से. ओ हो, मैंने उसी से पहले ही छोड़ दिया था स्ट्रीम देखना. बट आई थिंक ही मेड टॉप 4 ना, तो दैट शुड नॉट बी एन इशू. नो वन कैन फिट द 6 एट आर्सेनल. हाँ यार, आई थिंक इट्स ट्रू. It took Partey more than one season. You're right. Do you think Ricky Puig can relaunch his career in elite European? I think Ricky Puig has mentally checked out of European football. Ricky Puig is a मतलब that's, and I am not saying कि that's a bad thing. उसने एक sort of lifestyle choose कर लिया where he parties, where he's out, where he's spending a lot of money on girls and drinks and partying, and LA is the perfect city for him, यार. So I don't think he wants to return. भाई आप लोग ये सच्ची समझो कि जैसे हम लोगों के अगर कभी सपने होते हैं फुटबॉलर बनने के लिए,
कुछ लोग के सपने होते हैं कि हम एलीट कंपटीशन में ही अपने आप को टेस्ट करें, बट सम प्लेयर्स जस्ट वांट टू प्ले football as a job. For them, if you go to the office, if you earn money, for them it's the same thing. And for some people, they come from poverty, उनके लिए बस पैसा कमाना ही सबसे important है. ऑस्कर याद है, चेल्सी के लिए खेलता था. Then he went to China. Why? Because he said, I like football, I get to play football, I also get to set up my family for generational wealth. सही बात है यार. उसके अगले 2-3 पीढ़ियों को काम नहीं करना पड़ेगा, और वो बंदा इतनी पॉवर्टी से आया हुआ है. तो you can't blame people. Like, if Ricky Puig wants to stay in America and California and live his life, let him live his life. If he's a goat there, then he's a goat there. Zlatan भी चला गया था. एक और प्लेयर याद है तुम्हें, आंड्रे पियर गिनियाक, जो फ्रेंच लीग में खेलता था. अब वो मेक्सिको लीग का हीरो है बंदा. टीग्रेस के लिए खेलता है गिनियाक. यही था ना, गिनियाक था, कौन था? आई थिंक इट वाज गिनियाक ओनली. तो या, also, just an opinion that this time slot is most appropriate one with all the retention of the audience back in India. Hi, Mridul. Um, I understand that, and that is why I chose this slot. But I was also thinking that ना कुछ लोगों को fatigue हो जाता है. I mean, इससे पहले everyone streamed about the Champions League. निधि भाई, मानस भाई stream, मोहक भाई ने इतने घंटे stream करी. Almighty Blues उन्होंने stream करी. So then what happens is that you've seen so many live streams, you're like, अब एक और stream कौन इतने time YouTube पे बैठेगा and everything. लोगों के time भी होता है. So I was thinking मैं थोड़ा जल्दी करूं, but I still haven't fixed the slot. This slot works perfectly for me because it's 5 in the evening, nothing much is happening. मेरे भी काम हो जाते हैं, and after this I can go out to the shop or make dinner or whatever it is. So it works for me as well. देखते हैं यार, धीरे धीरे समझ आएगा मुझे analytics देख के कि what is the best slot. ओपी, हाँ, Arsenal OP, Daksh bhai, of course, Aman bhai, Arsenal OP, thank you for subscribing. Danilo would require some time if he joins in Jan, and established CM should be taken up by Josh Naidu. But yes, Eben, I understand. But who is the established CDM, right? Unless you are signing somebody of Casemiro's caliber, or people are saying Locatelli, people are saying Bruno Guimaraes. बहुत सारे हैं मतलब यार. तो डिपेंड करता है. I mean, who do you mean is that CDM? I think we should follow this model of buying high potential young players who, even if they don't work out, have a lot of resale value. Let's say Sambi doesn't work out. We paid 15 million for Sambi, right? Um, Agar even if we manage to sell Sambi for 17 or 18 million also, no, it's fine. We made some profit on it. Um, Same with Danilo. Let's say we pay 20 million for him. He works out okay. Let's say he gets homesick like Torreira. We sell him for 25 million, done. But now we tried this with Torreira also. उसके एजेंट ने इतनी बकचोदी मार दी that we barely got any money for him. Is Torreira still our player, by the way? भी हमने उसको बेच ही दिया है. मेरे को I'm not really sure Torreira के साथ क्या चलता रहता है. Still very pessimistic before every match. And he was sigh of release after a good result coming from years of bad result under the previous owners. Joshua, are you talking about Newcastle or Arsenal? If it's about Arsenal, then yes, we all share your PTSD. About Newcastle, oh, bro. Oh, yeah. Those previous owners, uh, Steve Bruce as a manager, that is huge. Abhi, from Steve Bruce to Eddie Howe to the kind of football you guys are playing. I remember last season, till about the last game week, you had very few points, and now you're in like top four. Congratulations, man. It's huge. Great club, Newcastle. And they've not done silly business. Abhi, I talked about, I ranted about how, all the City fans are like laughing, ki, haha, you're going to challenge us. Bhai, they've signed Wilfred Bony and Ilakwe Mangala. I can never forgive them for that. And pretending that they've always been a well run club, that is not true. For every Kevin De Bruyne and Julian Alvarez and Sergio Aguero, they've had an Ilekwe Mangala, they've had a Wilfred Bony, or कौन से, they've had a Roque Santa Cruz, they've had a Joe, they have a Robinho. Bhai, City is not always the perfectly run club. Don't fall into this trap. Bruno would have been perfect, yes. Oscar! Bhai, used to love that player except when he played against Arsenal. Locatelli, yeah, there is this thing in me, Piyush Bhai, where I feel that Italian clubs are extra stingy.
They will ask for a lot of money, but when they want your players, they'll only be loan with an option to buy. And chalo, Locatelli is in Juve, but Juve takes every Italian player we like. um, बहुत सही प्लेयर होगा आर्सेनल के लिए, हाँ भाई पीयूष भाई सही तो होगा, बरेला भी सही हो सकता है, बट देखते हैं यार. यस गिनियाक, यस गेस गिनियाक. Thank you, Himanshu bhai. I've seen him quite a few streams. No problem. I think you mean quite a few streams, but I appreciated Himanshu bhai. Thank you so much. I'm so glad कि 20 people are still watching, man. I thought अभी तक 6-7 लोग हो जाते, 11:30 बज गए हैं, सबको सोना होगा. Chelsea will be a tough game, even though we're playing at home. But I guess they have difficult fixtures too with Man City before they play. So I think for Man City, they'll rotate heavily. They can't afford any more lapses in the league. But your advantage is, and I can tell you this from personal experience, if you attack Chelsea, Chelsea will not do anything. They don't have the attacking talent to match at this moment an informed Newcastle United. And Fabian Schär and Kieran Trippier and Botman, all these guys are doing really well. And I think you can handle Chelsea really well. I think it'll be an easy victory for you guys. Ruben Neves, too slow, man. It's like getting another Xhaka with longer hair. But this guy can also shoot from distance. I wouldn't mind him, but only if we can't sign anything else. I think Douglas Luiz यार इतना बढ़िया हो जाता if we got Douglas Luiz. He's not that bad. He's also Premier League experienced and he's also young. And उसकी गर्लफ्रेंड देखी है, of course तुम लोगों ने देखी है, मैं किससे पूछ रहा हूँ. But yes, लिंक आया था लोकेटेली का आर्सेनल के साथ. बट नहीं यार, जस्ट आई डोंट कीप होप्स मैन. ये व्लाहोविच वाले सागा के बाद ना मैंने इटालियन टीम से होप ही छोड़ दिया. क्या बेच दिया भाई? आई डोंट नो. ओ हाँ, टोरेरा को बेच दिया. नो ही इज इंटरेस्ट. एनी प्लान्स टू वॉच गेम्स लाइव? ब्रो, फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स मोस्ट लाइकली आई विल व्लॉग दैट डे बहुत अच्छे से. गैलेटासरे को परमानेंट ट्रांसफर भाई. न्यूकासल, यस. आइलैंड पार्टी का न्यूकासल, अच्छा. 7 year contract भाई. Nobody can. Do you remember Alan Pardew dancing? Ah, what a character, man. Steve McLaren to Benitez. Benitez was good for you. To Bruce to Eddie Howe. What a journey, right? Do you have any future plans of flying to London? Yes, I do. Like I said, I'm waiting for my residence permit and then my visa, and then by next year after Christmas, I will go. Most likely in February. Being an LFC fan, I really fancy Barella in a midfield, but he doesn't want to leave Italy. And that, Jishan, is what I was saying. Italian players are a pain in the ass to get out of Italy. Um, Very few get out of Italy, like Marco Verratti, and then they go to a nice city like Paris. Italian players love Italy, man. What can I tell you? They're used to the food, they're used to the culture. बस वही है भाई. बहुत वेट करने के बाद आर्सेनल का चैनल आया, रोज लाइव आया करेंगे यार. कोशिश तो रहेगी ब्रो. But I will try to make videos more often than not. Again, of course, जैसे मेरे को कैराबाओ कप एंड यूरोपा लीग के लिए वीडियोस बनाने में उतने मजे नहीं आते, तो मे बी वी कैन डिस्कस दैट लाइव. हमने तो यार अभी तक ब्राइटन के अगेंस्ट वो बात डिस्कस ही नहीं करी. इसके बाद जल्दी से करते हैं. 7:20 in Germany, so not late. Happy and Arsenal YouTube is available. Enjoy in Germany, Eben. I'm in Ireland myself. So Europe OP. And he's Brazilian. कौन भाई? I am sorry, Golazo bhai, I forgot. Alicia Lehman. Oh yes. Oh, Douglas Luiz. Yes, and Alicia Lehman. Everybody has seen that shorts. I can imagine everybody has seen that shorts. Douglas Luiz का middle name भी Gabriel. भाई सलीबा के अंदर भी Gabriel है. There's so many Gabriels at Arsenal. Always dreamed of seeing Kimmich at Arsenal. Plays for the badge. Passion is unreal, but he's kind of untouchable at Bayern. Bhai, dream signings would be Kimmich, Alaba. Bhai, these guys would be insane. Trossard select हो गया Belgium के लिए? I haven't seen, bro. Generally haven't seen. We'll see. Don't know how much you will hate this, but I'm a Barca fan and I have a soft spot for Arsenal. They are doing well, but I would love to have a player like Saliba in my team. Bhai, whenever a Barca fans की नजर पड़ती है ना आपके प्लेयर्स पे, तो आर्सेनल फैंस की एंजाइटी ऐसे हाई हो जाती है. बिकॉज हमने देखा यार, फ्रॉम फैब्रिगास एंड सॉन्ग एंड हिलेब, of course Thierry, so many players have gone to Barca, found success, and Barca ka pull is insane. Nobody can deny it, bhai Prince bhai. So yeah, I think every team would want Saliba, and इस वर्ल्ड कप के बाद सलीबा को अपनी खुद की वैल्यू पता लगेगी. I wouldn't. I
Saliba looks to me like a Barca, Real, or a PSG player already. These teams need a young centre back who will do this, and hurts, but I think we can keep Saliba for the next 4 years. Can you get Tielemans? I don't think so. I don't think we want him. Otherwise, हम उसको समर में ही ले लेते. टीलेमेंस तो आने की कोशिश ही कर रहा था यार, बट आई थिंक आर्टेटा ने कर दिया. अलीशा को आर्सेनल फेमिनी में ले और डगलस लुइस अपने आप आ जाएगा. भाई आर्सेनल की वुमेन्स टीम इतना अच्छा खेलती है. I don't know how Alicia Lehman is as a player, but yeah. Rodri, Haaland, KDB. If you're talking about dream signings, by let's not become City. Some of the Brighton players would be great additions to any team. That is true, man. Um, but it has to be seen how these players do. There's some. I get what you're saying, Joshua, but some players are best for a system. Like, do you remember Danny Drinkwater? Amazing for Leicester, right? Bakayoko, amazing for Monaco. But as soon as you take them out of the system, something happens. Drinkwater is God knows what's happened to him, and Bakayoko is still वो तो मिलान चेल्सी मिलान यही होते जा रहे भाई उसके साथ. Vermaelen, of course, यार. Vermaelen, captain Vermaelen also going there. Trossard is also. We shall see. We shall see. And I think Liverpool will be all over him. Safe warm winter in Europe, bro. I am energy crisis is scaring me. Prince Bro, same feelings. Yes, get Saliba signed before World Cup. Unlikely, 100% not happening. I can tell you guys this much. If it happens, क्या होना है? If Saliba signs before the World Cup, what should we do? Let me know chat में कि क्या करना चाहिए if Saliba signs before the World Cup, because I am 100% sure it's not happening. His agent is smart. He is smart. World Cup से पहले he knows उसकी value World Cup के बाद कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है. He's gonna ask more money from Arsenal or he's gonna go off. Messi is my dream. भाई जो फैन बेस आ जाएगा ना फिर हमारा क्रेजी स्पर्स आर्सेनल पीएसजी सिटी नेवर वन द चैंपियंस लीग. या मैन, स्पर्स का तो चलो समझ आता है. स्पर्स हैवंट वन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आर्सेनल वी वर क्लोज twice to winning a European trophy but नहीं जीते. PSG, yeah, but I don't think it's far away from when they win it. I think it'll be very funny if they win it after Mbappe leaves. City never won the Champions League, not too far away. Yes, me too, Joshua, man. Kudos to you. And भाई आपके मुंह में घी शक्कर ऐसी मीठी मीठी बातें बोलते रहिए. Thoughts on Barca versus Man United? I was so happy. I was on मोहक भाई का stream. मैं हंस रहा था because मोहक भाई गाली दे रहे थे, सादिक भाई गाली दे रहे थे. It was so hilarious. पहली दो balls and Barca and Manchester United निकल गई. Of course, maybe it is rigged, maybe it is not rigged. Hi, Anuj. But yeah, man, it's so insane. It's great as an Arsenal fan because that means one of the contenders gets eliminated out of Europe completely. Um, so yeah, it's good for us. But मैं दोनों में से किसी के against नहीं डरता. Even if we have to face them in the next round, doesn't really matter. Um, Anuj, hello. Cedric का क्या हुआ? He's there, man, and I think Cedric की कुछ qualities हैं off the field जिसके लिए we will keep him. And he's important. Arteta कहता है खुद, he is one of the smartest players in the locker room. Manager level quality. वो tactically भी बहुत सही है. सादिक भाई तो भाई El Sadico in the chat. Um, predicted 11 against Brighton. We will get to that and we will do this and we will wrap it up in a few minutes. It was funny seeing Man United draw. What were the odds? Bhai, the odds were always there. It was written by FIFA. Sorry, UEFA. Arsenal versus Barcelona in the UEL final. Bring it on. I will look forward to that revenge game. But yeah, getting to the Europa final is also not easy. Plenty of good teams. Sevilla, Atletico तो नहीं, Juve भी है भाई. Let's not count out Juve, no matter even if they're playing haram ball. Okay, guys. Let's talk about the Brighton game. Okay, what do you think we should do about the Carabao Cup? Carabao Cup में स्ट्रॉन्ग टीम खेलनी चाहिए या फिर ले आओ 16-17 साल के बच्चों को? क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ यार,
वॉच अलॉन्ग करोगे नेक्स्ट ईपीएल मैच का भाई? एक तो ना प्रॉब्लम ये है, मेरे पास यहाँ ना ना हॉटस्टार चलता है पीयूष भाई, एंड जो स्ट्रीम होती है वो ऑलरेडी काफ़ी डिलेड होती है, एंड आई डोंट थिंक वो स्ट्रीम भी काफ़ी डिपेंडेबल है इंटरनेट के बेसिस पे, तो आई डोंट थिंक आई कैन वॉच अलॉन्ग रिलायबली, सो सॉरी ब्रो। अनलेस कोई हॉटस्टार से स्ट्रीम करके डिस्कॉर्ड पे कुछ कर रहा है और फिर मैं डिस्कॉर्ड पे जाके देख रहा हूँ, नहीं आई डोंट, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आई डोंट थिंक वॉच अलॉन्ग हो पाएगा यार। Spurs won the Champions League somehow. What would you do? I will wake up because वो सपने खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये सारी चीजें सपनों में ही होती है अमन भाई। So if Spurs won the Champions League, it is time to wake up. बहुत लेट हो चुका है। But yes, let's talk about the Carabao Cup, man. It's a very interesting thing. मेरा पर्सनल बिलीफ है इस आर्सेनल टीम को एक ट्रॉफी की अगेन जरूरत है। वी नीड टू रिमेंबर एंड वी नीड टू गेट दैट विनिंग फीलिंग वेरी कॉमन बिटवीन अस। हमें फाइनल्स, जितने फाइनल्स खेलने खेल सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने आर्ट्स कास्ट एक्स्ट्रा सुना है, इफ यूर एन आर्सेनल फैन, यूड also hear James saying this, that it's not the worst thing if we play a weak team and we get eliminated from the Carabao Cup, because it is 4 to 6 extra games and it doesn't really make sense। अगर हमने strong team खिलाई, हम आगे बढ़ गए, but if we get eliminated in the semi-final, we've ended up playing extra games without any benefit and with more chances of injury and tiredness। मेरे हिसाब से यार, like it was said in Arscast, बच्चों को खिलाने का टाइम आ गया है and it is time to sacrifice the Carabao Cup। FA Cup I would not sacrifice, but Carabao Cup कर लो। FA Cup तो खैर it is our own personal cup। Carabao Cup में यार नहीं, it is too much, man। But like James again said, knowing Arteta, he is a manager who will not um, let go of a competition। Before I go forward, guys, please stream को एक बार like कर दो अगर आपने like नहीं किया है। um, and that will help me a lot। engagement थोड़ा बढ़ता है and मुझे भी दिखता है कि कितने लोग actually stream से comments के अलावा भी engage कर रहे हैं। Of course, whether it's 20 people, whether it's 2 people, I'm happy and grateful that आप लोग यहाँ पे हैं। But liking this stream helps me a lot as a channel। Anyways, so मेरा तो personal opinion है, it's time to let go of the Carabao Cup। It's just too many extra games without much benefit। But do you think it is a trophy we should go for? Realistically, अगर हम इस सीजन प्रीमियर लीग नहीं जीते, do you think we should still end it with a trophy even if it's the Carabao Cup? I think yes, but यार वही extra games की बात है ना, I'd rather focus on the Europa League as a trophy। um, but जैसे मयंक ने कहा है, Arteta said we would go strong and we are serious for the cup, and that is the kind of manager Arteta is, man। आई थिंक ये विनिंग कल्चर सेट करने का भी एक चीज है। यू कैन नॉट टेल प्लेयर्स टू स्विच ऑफ मेंटली कि यार ये गेम मत, इस गेम को आप सीरियसली मत लो, आप बस अपना बस ऐसे खेल लो। गेट इथन नवानेरी, गेट योर 16 ईयर ओल्ड, प्ले योर अंडर 23s एंड आप मस्ती करो। बट यार आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर कैराबाओ कप की वजह से कोई ऐसी इंजरी आई जो हमारे प्रीमियर लीग कैंपेन को काफी हर्ट कर दे। Of course, Carabao Cup बहुत important हो जाता है for other players also, like Sambi, like Cedric, like Marquinhos, like Fabio Vieira। हम सेम 11 नहीं खिला सकते प्रीमियर लीग में और हमें खिलाना भी नहीं चाहिए। एंड इन लोगों को गेम फिटनेस एंड मैच फिटनेस देनी चाहिए, जैसे लिवरपूल हैंडल करती है ना। दे प्ले देयर यंग टीम्स। आई थिंक क्लॉप तो कभी कभी मैनेज भी नहीं करता ये गेम्स, पेप लिंडर्स करता है। एनीवेज, लेट्स टेक सम कमेंट्स। आपको मेरा आई थिंक पक्ष तो समझ ही आ गया हो गया। भाई जुगाड़ करो, मजा आ जाएगा। ओ भाई हाँ, देखते हैं यार, अगर ज्यादा डिमांड होगी आई पुट अ पोल इन द कम्युनिटी पोस्ट वन डे, मे बी आफ्टर द वर्ल्ड कप विल डू अ वॉच अलोंग। It would be a distraction in January, just play the B team, if we crash out we crash out, fair enough, man। But like you said, Arteta is not that kind of a coach। Arsenal's approach should not be that serious for Carabao, because Arsenal have a good chance of winning the Premier League, though if not then we should focus on winning the Europa। हाँ यार, I think है, but a trophy is a trophy, man। You can't say no to trophies। It's good to have trophies on the regular। It's time we pull out of this useless competition। Let's play Nyaneri। हाँ यार, जेम्स भी कह रहा था it's time for Ethan Nyaneri and his friends to have the night of their lives।
second last game before the World Cup, we should consider a semi-strong team with a mixture of experienced players who might not feature in the World Cup with youngsters. Yeah, if you look at who are featuring in the World Cups, right? We have Saliba, Ramsdale. I don't think he'll go, but he'll not play. Ben White not sure. Gabriel not going. Zinchenko, I don't think. No, Ukraine is not there. Tierney, I don't think Scotland's also there. I'm not sure. Xhaka will be there. Partey will be there. Odegaard is not there. Saka will be there. Martinelli is there. Gabriel Jesus is there. So it's pretty much 8 to 9 out of our starting 11. The only players और जो एक दो players हैं उनकी श्योरिटी नहीं है. Maybe Zinchenko को खिला लो फिर, but नहीं. It's time for Tierney and everything also. Liverpool did that last season. Look at them getting fatigued now. हाँ यार, I don't think you. That's a very good point. Golazo. If you play every game in the season, you will get fatigued. And look at Liverpool, man. Play B team. If we reach latter stages, then stronger team for sure. I think you should just play your B team and see how far they can take you. Good match experience. मैं टेबल टॉपर्स जनवरी में मेन टेबल टॉपर्स जनवरी में पता लगेगा. विंटर्स में इंजरी बहुत होती हैं. अब आर्टेटा संभाल ले टीम को तो बस में मजा आ जाएगा. हाँ भाई पीयूष, बिल्कुल सही कहा आपने. But yeah, it's not only January, February, it's also March. For us mentally, it's also April and May, जहाँ पे हमने last season falter भी किया था. 3 games in a row हार गए थे. And then Newcastle का तो सबको पता ही है. FA Cup plus Europa Cup plus top 2 in PL would be ideal. It would be the best way to finish the season. 2 trophies and a top 4 finish. Perfect. It's time we pull out of this useless. We've done this. Ahanaf, prediction. Which 2 or 1 transfer you see happening in January? I see Danilo happening most. I think Danilo will most likely be happening. We'll have the Liverpool bridesmaid trophy. Winning breeds confidence. That is true, man. Like I said, bhai, finals mein pahunchna will teach these young players how to handle pressure and how to win finals, even if it is a bloody Carabao Cup. Yes, we've done this. Brighton would take the Carabao Cup more seriously, IMO. It's a good chance for De Zerbi to put players into his philosophy. Would you guys be disappointed अगर हम निकल गए Carabao Cup से? If you think about it, if you literally think, परसों मैं वीडियो बना रहा हूँ. Of course, Arsenal जीतेगी तो सब खुश होंगे. But will you be disappointed if Arsenal lose and crash out of the Carabao Cup? Next Arsenal target, please. Danilo is the most likely target, my guy. Other than that, it's been very quiet. Mudrik is the only one who's been named, but his price might be very off-putting for us, considering Shakhtar ka person said that we value him as much as Anthony. So I don't think that's happening. UEFA may probably do another shit after playoff round. I think Arsenal might be on a line. Nahi, I mean, Maxine, I think that is something I don't really go with. I think this playoff format was a new thing, and they wanted to build hype around this, which is why they placed the 2 biggest names together to build hype around it. Now, if you see Twitter, if you see all social media, it's all been about Manchester United, Barcelona, Manchester United, Barcelona. Imagine if Manchester United got Rene, Barcelona got Nantes, and somebody else got something else. The hype would not be as much as this is, right? So for me, I think this was, if it was deliberate, then it was a great ploy to build hype for a new format, which is what will make people pay attention. And it makes sure that next time they want to try a new format, they might be more hype. So you might be right. Eventually, in the round of 16, we might see big teams, but you should pretty much expect that there will be some big games from the round of 16 and the quarterfinals. But yeah, if imagine if in Barcelona or United, whoever goes through, play Arsenal or Juventus in the next round, it'd be crazy. Turner, Cedric Holding, Gabriel Tierney, yes, good lineup. Very shaky in defense, but I will not be surprised if this is what we see. So good prediction, Akarshan. Dublin tour. We'll see. Maybe we'll see. No shit coverage, shit cup, shit timing. Yes. Okay, that is what Mayank thinks would break the home record. Oh, that is also true. This is a game at the Emirates, na. I don't think Arteta wants to lose. Mudrik को ले आओ भाई. हाँ भी पड़ोस में पड़ा लेके आता हूँ. Nelson should start. He played really good against Nottingham.
It'll be a good game for Nelson to be, because it'll show us that what he can actually do. No, until our B team gives a fight. ठीक है. हाँ, so you guys will not be disappointed. Mayank will not be disappointed. Golazo will not be disappointed. Eben will be disappointed if the first 11 loses in Carabao. Else it's just a plus. Would want FA Cup, Premier League, and Europe. I want to win the FA Cup, man. It's been, when did we win it last? Arteta's first season, right? Yeah. It's time to win the FA Cup again, man. It's time to extend our lead. Winning a trophy would give the taste of blood to these which is exactly what I'm thinking, which I think is what Arteta is also thinking. You need to give these guys a taste of winning, so that what happened last season does not happen. When you're in a pressure, even if it's a quarter final, if it's a semi final, it's a final, you learn from experiences like this, man. And if we can't buy experienced player, जो everyone is saying ना कि हम experienced players लाओ, experienced player का मतलब क्या होता है? जो big games में खेले हैं, जिन्होंने football बहुत time तक खेला है, who have the experience of playing in derbies and on the big stage. If you can't buy experience, you'll have to build experience, and I think that's what Arteta is going. I don't think we're going to buy experience. I think our strategy is going to be that we will build experience. Okay, 5 more minutes, guys, and then uske baad we are wrapping up this stream. Any last thoughts, any last things you want to talk about? If there is nothing, tell me one good thing that happened to you today. It's 11:30. I'm sure something good must have happened to you. तो 11:30 से ज़्यादा ही 12 बज गए होंगे भाई लोग. So any good thing which happened to you today, um let me know, because it's good to also just look back on the day and think. Today I went to an art gallery. It was really interesting for me. ये आई एम ट्राइंग टू accumulate जितने ज़्यादा experiences हो सकते हैं as possible, which I can could not do in India. Going out for long walks without sweating, pollution कम है, going to visit art galleries, interacting with many people, going to different kinds of pubs. So today I went to an art gallery. It was really good. That was a huge positive for me. मेरा काम भी आज बहुत अच्छा गया. So that was one positive for me. Let's look at some comments. The football we are playing is so enjoyable, bro. What do I think? I think it is the best we've played in a long, long time. Um, and I hope long may it continue. I think if we sign the players onto contract extensions, बहुत बहुत likely possibility अगले 3-4 साल तक हम ये करेंगे. Pep never undermines Carabao, but he has the depth to challenge for every time. हाँ भाई, if you're bringing on Grealish from the bench, if you bring on Haaland from the bench, if you bring on Mares from the bench, then you can play the Carabao also, bro. You can play Carabao with yourself also. They literally have two 11s that they can play in the Carabao Cup. You should consider a squad before planning. Huh, man. There is a thing which is like I said, Arteta would want our players to play well, get a taste of experience and everything, but naivety नहीं होनी चाहिए भाई. Our असली goal is top four Champions League, Premier League में जितना है हो सकता है. We cannot fuck that up. Chalo Daksh bhai, see you around. Chus Ebin bhai. Good to have you on the stream. Just a hypothetical question: if Xavi fails badly to win trophies and they approach Arteta, I will not be Prince, because Arteta is a very committed manager, and I don't think he will move until his process is completed. Otherwise, it reflects badly on him that if he is a project manager, he abandons the project and leaves. So this is what I think about Arteta. He is not going to leave. Even if we crash out of the final knockout stage, I hope it pushes to do better in the Premier League or on the stage where it really matters. Absolutely, Mridul. Spot on. Brighton will slap our B team if we go with that plan. We can play strong side against Brighton, let our B team play against Wolves. Yeah, but do you want to not end the Premier League on top of the table? I think that is much more of a psychological boost than, it'll be like if we end before the World Cup in second, now, let's say the Wolves team slaps us, and or we don't, we get a draw and City get a win, because City is playing Southampton, which is without a manager. So City is खा जाएगी भाई, हालन खा जाएगा उनको. um वो ना साइकोलॉजिकली थोड़ा दिखता है खराब, because you've been top of the table for most of the weeks and now suddenly you're not. And फिर oh ho, Arsenal champions of first half of the season, अब देखो second, अब City will not let go, and we already know City barely drops points. So yeah, Arteta can't deal with big names. I don't agree. Maybe, but I don't agree.
Sauce top of the table again. अच्छा लगता है ना Golazo. It looks good, right? ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल मैनेजर में भी गंदा ही खेलते हैं. Yes, that is true, man. How was that plant burger? Absolutely shit, Aditya. I would say nobody should have a plant-based meat burger ever. Bro, what are you studying currently? Jishan, we'll talk in Twitter DMs. अच्छे से, don't worry. It was a holiday for me for my work. Congratulations, Mayank bhai. May your holidays continue for a long time. It was a spot corner for Arsenal. My expectations from the season is at least FA, Europa, or both. Premier League is quite difficult when there is City. Yeah, that is true, man. It's very difficult to compete with City, but like I said, I will not be surprised if most football fans have a soft spot for Arsenal. Thank you, brother, that you started this channel because Indian football community really lacked Gunas. I agree, and I think that was because Arsenal wasn't performing at the best, and there was really no point for other people to make a channel because they'd get bantered. But even if I get bantered, it's fine. सॉरी वर्ल्ड कप में केडीबी को इंजरी हो गए तो मजा आ जाए नहीं भाई आई डोंट I mean, it's great for Arsenal, but I don't want to wish injury on any player. KDB as a footballer is a great player to watch, man. When he scores goals, मैं भी खुश होता हूँ. Okay, guys, wrapping up now. Which part of Delhi do you belong to? मैं गुड़गांव से हूँ भाई. Would love to see if there'd be a group of supporters which is active on YouTube. You'll have to check Facebook for that, man. I'm sure काफी सारी screenings होती थी Arsenal की गुड़गांव में तो at least, but I'm not really sure if there's any other group. Thanks a lot, bro. Where we all gooners can India from Connect and Enjoy. And of course, man, keep coming into the chats, keep talking. Thank you, Daksh bhai. Nahi bhai Vivek bhai. Thank you for subscribing and being. This channel is nothing without community, and you are the community. Barca see Arteta's Javi replacement. City see Arteta's pub success. We are finally lucky to have him at a club. Bhai, best thing would be if Arteta does not go anywhere, and I would be so happy with that. Praying for injuries is not really, I agree. It'd be better if you go toe to toe with them with a fully fit squad. I agree. Injuries are, of course, a part of the game, but let's not wish for it on other players. Need to buy Tielemans. Ashutosh, if we had to buy Tielemans, now we would have bought him in the summer only. It's pretty clear Arteta doesn't see him. Xhaka is good, but need proper. I think Xhaka ka phasing out will start 2 seasons ke baad. Partey ka season will come. I think next season onwards we'll start looking very actively, maybe this January onwards, very actively a Partey replacement. Good night, bhai. Take care. Good night, Jishan. Thank you for coming. Thank you. Come on, you gunners. Thank you, Ahanaf. All right, guys. Oh, wow. 1 hour 47 minutes. Thank you all for coming. If you haven't liked the stream, please like the stream. Once the stream ends, you can always leave comments what you thought about the stream. एक काम करते हैं. I know काफी सारे लोग चले गए हैं, but whoever is still here, what we can do is after the stream ends, you can write in the comments what you want me to make videos about, what you want me to talk about, और ना next live के लिए कुछ agendas लिख दो that we can some of them we can take, and doesn't have to be Arsenal also, but can be general football as well. But let's avoid the generic terms like Messi or Ronaldo or who is your favorite player of all time. I mean these things I can put. वो तो मैं खुद का एक FAQ भी लिख दूंगा उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. But yeah, let me know. Feedback is very important to me. I usually thought कि मैं last के 5 minutes feedback के लिए रख लूंगा, but I think keeping this post stream comments open for feedback as well as whatever you want to discuss, whatever you want me to make a video about or you want me to discuss in the next live, let me know. And doesn't have to be Arsenal related, bro. Can be football related in general. Just let's not go with the cliche questions like Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland. What is Arsenal dream signing? Let's go something थोड़ा in depth. Like for example, मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ on rotational fouling and how Arsenal are starting to use जो City बहुत अच्छे से करती है, which is rotational fouling, which is different players different times पे foul कर रही हैं और आर्टेटा की philosophy में fouling कहाँ आती है. It's a very interesting thing which I've come to discover. देखते हैं. World Cup related now, possible. Congratulations for 700 plus subs. All thanks to people like you, PL. Thank you for subbing. Lots of love from Nepal. Thank you, Maxine.
if that's your real name, and if it's not, it's fine. But lots of love to Nepal, my friend. Make me mod. A for Arsenal. Ashutosh, if you show up for the next two streams, you will be a mod 100%. What type of football philosophy do you feel attracted to? How do you feel? If it is, uh, Mridul, if this is a question, do it post stream. ठीक है, post stream सब लोग लिख देना. Tactical fouls, rotational fouls, yes, the same thing. Soon मन के, भगवान करे, inshallah, may God help me to that. Topic for the next stream, yes, Mridul, just put it after the stream. Okay, guys, 1 hour 50 minutes done. जो अगले दो स्ट्रीम्स तक आएंगे रेगुलरली, मे बी वन और टू ऑफ यू विल बिकम मॉड्स. यू ऑलरेडी हैव 5 मॉड्स, एंड फॉर 18 व्यूअर्स 5 मॉड्स से ज्यादा यूजुअली चाहिए नहीं होते हैं, बट डिपेंड्स कौन रेगुलर है. एनीवेज, थैंक यू फॉर कमिंग. गुड नाइट. अब सो जाओ. जिसके स्कूल है वो स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, जिसके कॉलेज है कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ. एंड या, Piyush, like I said, let's see if you're there for the next stream or the next two streams. I'll think about it. But thank you so much, Piyush Bhai. Thank you so much, Mridul, PL, Golazo, Ashutosh, Joshua, Maxine, Manash, Ahanaf, Jishan, Vivek, all you guys. Thank you so much for coming. Mayank, of course. Um, Good night and take care. I will now move. Stream के बाद comments पे लिख देना feedback as well as ideas. Bye bye.